Can you see my screen? I think now it should be shared. Ebe share ହେଇଛି? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है. So we will Sir, continue actually, from. sir, actually, माने एटी टिकेट function होचे तो I can be more participative today class. Sorry, I didn't understand. मैंने कौन कहुଛ? कौन मुकले fluctuate आम होची? घरे टिके ना मुकले आम घरे टिके function होचे so I cannot be Okay. as participative as. ठीक है. कोई नहीं. So sometimes some issues will keep on happening, but we have to keep on moving, right? For example, unfortunately, Manas sir, today we found out that he has dengue, right? So the last class review I noticed he was not very well, so he was coughing on all. And today it was we found he has dengue, so postpone his classes. Instead, someone else will take up the other classes, and then he will come on a bit later. But in any case, like you said, the show must go on, so we'll continue. We'll not waste any time. Okay. ठीक है. So today केबे होबार possibility अछि? ମୁଁ ଏଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, but initially ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି initially कि Feb 3rd week, but it's possible that it might even get postponed to March also. I don't know, like insider information that I'm just telling you. Okay. I'm not a personal insider also, and usually I don't like such kind of insider information also. But because a lot of people keep on asking, so sometimes you have to also inform. So as and when we keep on getting information, we'll tell you. Otherwise, don't focus too much on this kind of information. ଏବେ କଣ କି ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏବେ ପିଲାମାନେ କଣ almost ମାନେ you because you want to believe it, therefore most people will believe it, and it might happen କି ପୁଣି prepone ଟିକେ ହେଇଯିବ and ସେମାନେ as usual Feb 3rd week ରେ ବି ବାହାର କରିଦେବେ. So my suggestion to you is let's try to finish everything by Feb first week or at max Feb 10th around. Okay, 10th 15th. Okay. Let's say February 10th, so that you will have some time to revise and then go to the exam. Otherwise ଏବେ ପୁରା relax ହେଇଯିବ ଯଦି ପୁଣି ପଢିବନି, है ना? So जो intensity ରେ ଏବେ ଚାଲୁଛି, keep on studying. Okay, don't worry about exam. I always keep on saying कि ମାନେ serious candidates ମାନେ ବହୁତ exam ର possibility କେବେ ଆସିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ speculation ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତିନି, right? because ଏ speculation ପଛରେ ପଡିବ. କିଛି ଲୋକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି କି ସେମାନେ entire time ତାଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ intelligence collection ରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯେ ପୁରା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥାନ୍ତି କି ଆଜି ଏଠୁ information ଆସିଲା, କାଲି ସେଠୁ information ଆସିଲା, ଏମିତି ପଢନ୍ତିନି usually. So don't have that kind of attitude. Rather think कि we have a reasonable target कि Feb first week सुधा ଆମେ ଆମର first ମାନେ ଆମେ ଆମର class କୁ will try to wrap it up. Almost 90% of the syllabus should be covered by this time. Out 10% ଯାହା ବି ଅଛି, that again within maybe between this time also through any notes videos we'll also cover this 10% also. So it is our responsibility to finish the syllabus, but it is your responsibility to keep on working hard. Okay. So don't worry about when is the exam and all this. इन सब विषय से भापनी की बहुत सारा information gather करिए, try करो. Okay. So let's start today's class. Today is security issues. Today is our second class. So आज हमें देखियो security challenges in border areas. Very important topic. And এই chapter ରୁ भी usually question देखो, question कौन आसे छोटा छोटा chapter ରୁ ଆସିବନି. Usually जो security agency वाला chapter ଅଛି ना, এই chapter ରୁ usually अपन तो କିଛି question आसेनी. Even UPSC रे भी hardly question एथरू आसे. So maybe I'll just give you notes. या तो in general India रो security agency रो तो गोटे बहुत ही detailed note ଦେଇଥିଲି. ତା ବାଦ I just have to add Odisha security agency. I'll add because it is mentioned that security agency and their mandate for India and Odisha. So go through the notes and ଏଇଟା ତ ବହୁତ ହି factual part, ସେଥିରେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ. For example କୋଉ organization suppose CAPF ର ଏଇ organization ଟା ଏଇ year ରେ ହେଲା. This is for example let's say कि Assam Rifles is called the friend of the people, friend of Assam. ये सब ଜିନିଷ ସବୁ ପଢିବାର point କିଛି ନାହିଁ. exam ରେ ଏମିତି directly ପଚରା ଯିବନି କି ତମେ ଲେଖ CAPF ବିଷୟରେ କଣ. Rather some you should try to understand there are some broader themes which will be asked from security issue. If you see what are the themes, for example they will ask you in generic what a theme pachara haba ki what are the challenges to India's security. Okay, overall what are the challenges and overall what are the solutions. So that part also we have seen.
And today also we are going to discuss many of these challenges and solutions. Similarly, another theme, important theme is border area re amar challenges kono. Again, this is a theme. Now, within that, they can specifically ask about Pakistan or they will specifically ask about China. Although today we'll also read about Bangladesh, Myanmar, but point is they will usually focus on the broader things. Okay, don't think they will take a very tiny stuff, very specific thing, then they will ask you 15 marker question. Usually so, for example, another theme is in general black money and money laundering. Okay. So overall, if you have idea, ki what are the issues, what are the solutions already, what government has undertaken, and what is the way forward, then you will be able to write a good answer on this. Now, within that, if you are reading in detail about some specific part, suppose you are reading in detail about hawala, don't expect ki hawala upar a 15 marker question as you, right? So that is my point. Wherever focus is needed, I will give you more focus. Wherever it is not needed, so there will be either it will be in notes or I will make you write some answer on it. Okay. So through some way we'll cover almost everything. But through that I want you to understand which are important themes. Okay. So in the first class we had covered 3 topics. Today we are going to cover maybe 1.5 or 2 because this chapter is really big chapter. Okay. Security challenges in border areas. And it's also very interesting chapter. And if you understand the essence of this chapter, you will also be able to export that knowledge into other topics, right? In security issues. That's why we are going to read this. Okay, so enough introduction. Let's just dive straight into this. So introduction ଯଦି Sir, ଏଇଭଳିଆ sir, yes just ଖାଲି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମୁଁ କହିପାରିଲିନି କି ମଝିରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ we should get a break କାରଣ ବହୁତ continuously I think 10-12 ଦିନ right କ୍ଲାସ୍ ହେଲାଣି so will actually give you a break if you want 14th I think Sunday achi, right? And 15th I think Monday achi. 15th is probably I think Makar Sankranti. So if you want we can give you 1 day break either on Sunday or Monday. देखो ब्रेक तो आमे तो खुशी देदू आमको भी लेस परिश्रम आमे तुमको कहदेबू कि तुम नोट माने पढ़ी दियो एथरू पढ़ी दियो बट वी फील दैट इट्स आवर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर द सिलेबस एंटायरली सेति पई नले आमको भी तो कष्ट होची ना so if you want we can I mean I was going to give you a break Monday usually bhavuti but if you want we can also give you a break on Sunday also so we'll vote in the group okay if you want we'll give you 2 days continuously also okay it's up to you okay so तुम भावो तुम 3 घंटा क्लास करूच तुम भावो how we are taking classes for 3 hours so it's okay because it's our responsibility ମାନେ ତମେ କ୍ଲାସ ନ କରିବାଟା ମାନେ it's up to it's your option right but ଆମକୁ ତ ଯାହା କ୍ଲାସ ନବାକୁ ପଡିବ so even if one person comes still then we have this responsibility to take the class right ନା ସେଟା ବ୍ୟାକଲଗ୍ anyway ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଠିକ ଅଛି again ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଏଥିରେ ବୁଝୁଛି कि देखो जो स्पीड रे जो पेस रे हमें जाउछ ना कोन होबो कि तुमको टिके ओवरवेल्म्ड स्लाइटली फील हो राइट एंड आई नो दैट पीपल विल फील अ बिट ओवरवेल्म्ड yes sir बिकॉज़ you will have a lot of content then there is daily answer writing फील होची सेमती okay just hear me out kon issue I'm telling you I'm giving you one insight try to understand what I'm trying to say okay so very very important try to understand so I know that we are giving you content daily answer writing achi tomorrow अन्य पाठ भी पढ़ियार अछि optional achi with that also some people have work also working professionals the point is that if you cannot handle this kind of pressure right now imagine how you are going to within 1 week how are you going to write for 3 hours and after that another 3 hours do it a sitting re likhiyo so first and foremost this is I always say ki mane mains ta hochi this is not an exam just of knowledge it is also an exam of attitude and within this attitude will also come your stamina also ठीक ଅଛି stamina and perseverance ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ so this is also a sort of development of this attitude or you can say the skill कि ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ overwhelmed feel ହଉଥିବ ସେଥିରେ ବି ଆମକୁ we have to keep on moving the second insight I want to tell you is that try to understand कि suppose class रे जो भी content दिया होची suppose x जहाँ भी task दिया होची जहाँ भी content दिया होची okay all of these consider if we consider this 100% even I don't expect you will be able to absorb this 100% it is fine I keep on telling you one thing don't be a perfectionist ଆମକୁ perfectionist ହବାର ନାହିଁ ଯିଏ ହବ ସେ ମରିବ but if out of this 100% even let's say 70% you are able to absorb even 60% you are able to absorb
And imagine someone is observing maybe 10% and someone is absolutely absent from the class. You see what is the difference between these two levels, right? So I would say even when you are feeling overwhelmed, if you are able to take 70 to 60%, 60 to 70%, if you are able to absorb, if you are able to understand what's going on, and even if you are not able to write answers, still at least you are attending classes. See, attending classes is the first and foremost thing. Other things will come on later. So then also you will be able to exam रे किछि किछि कीवर्ड मन पड़ियो यार सेटा होची कथा कीवर्ड किछि मन पड़ियो एटी किछि फोटो देखियो ए फोटो रु किछि मन पड़ियो ओके किछि कीवर्ड किछि फनी स्टोरी मु तुम कहितबी आज मु तुम कहि गोटे फनी स्टोरी अबाउट ऑपरेशन मेघदूत चलो एई सब जिंस छोट छोट जिंस एग्जाम पड़जन बिलीव मी गोटे गोटे क्वेश्चन आसीयो 10 मार्कर 15 मार्कर वेयर यू विल डेस्परेटली विश कि मते एटलीस्ट गोटे दुटा पॉइंट भी जदी जणा थांदा ना मु एटलीस्ट इंट्रो कंक्लूजन लिखि दी कि आस्ता so this is that, and where will that knowledge come from, where will that content come from? This will come from these kind of classes when you are pushing on despite feeling ki I need a break. And in general also will give you break, don't worry, यहाँ पर भी break दिया हो. But my point is overwhelmed feel करो, we understand it. I also know that you are feeling overwhelmed, but just be here. Sometimes just showing up to the field, that is half the battle won, because many times your opponent will not show up to the field. Hey bare, right now you are attending this class and similar class how could kiye join କରିଛି but they are not attending because ସେମାନେ exhausted feel କରୁଛନ୍ତି, right? So this is also important. Just ଦେଖ video ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଥାଅ, class attend କରୁଥାଅ, ସବୁ ଜିନିଷ note down କରିବି ନ କଲେ then also fine. Okay, I keep on telling you that 100% ନହେଲେ ବି 70% ହେଲା 80% ହେଲା then also it is fine. सर Is this सर हाँ पीडीएफ हाँ गुड़ा पीडीएफ गुड़ा चैनल रे टिके रखिथिबे परीक्षा जाए हाँ हाँ we have that common sense. एମିତି ନାହିଁ କି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ delete କରିଦିଆ ହବ. So channel will be there, our group will be closed, group will be there till the exam. Okay, don't worry. After exam also for some time it will also be there, and only after notifying you, if we want to close it, we will notify you earlier. ଏମିତି କିଛି sudden କିଛି ହବନି କି exam just ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ସବୁ ଗାୟବ ହେଇଯିବ. Okay, so don't worry about it. Okay, any other doubts? No. सर गोटे इन जनरल पचारा. सर लागू जे लाइक व्हाट इज मिसिंग लाइक आंसर तो डेली लिखा हो जे किंतु लागू जे जो फुल लेंथ टाइप रो आंसर लिखा दरकार कि कोन करे दरकार सेटी ते लागू जे किछि मिस रहि जाउची फुल लेंथ लिखिदब यार, गोटे गोटे राउंड टेस्ट सीरीज देदब ता आगु कोठी भी गोटे जदी फ्री टेस्ट सीरीज कोठी किए दउथबे यूजुअली नेशनल लेवल रे माने दियंती किछि डेली बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट से मतलब फ्री रे करांती, और जदी अल्प किछि अमाउंट नहीं भी करे परछंती डू इट. जदी ओडिसा बेस रे भी जे करूछंती ऑल्दो तांकर इवैल्यूएशन क्वालिटी गॉड नोस, बट स्टिल जस्ट फॉर एग्जाम यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस जाई कि देई आस. इधर घरे बसिकी 3 3 घंटा और जदि सेठी कोठी हॉल रे बसी देई परियो तो भलो देई दियो. बट पर्सनली व्हाट आई फील कि माने आंसर राइटिंग स्किल टा डेवलप हो गले then you will not face that much problem rather than ମାନେ ତୁମେ ଯାଇକି ବସିକି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥର ଲେଖୁଛ, ସପୋଜ ୱାନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ତୁମେ ଆଜି ଲେଖିକି ୱାନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବି ନୁହେଁ, ପିଲାମାନେ ୟୁଜୁଆଲି କଣ କରନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୟୁଜୁଆଲି ହ୍ୱାଟ ଦେ ୱିଲ୍ ଡୁ କି ଆଜି ଗୋଟେ ପେପର ଖାଲି ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ପେପର, ବୁଝୁଛ ତ? तो यार ମୋ ହିସାବରେ ବେଶୀ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, rather either write daily answers and at the end give one round continuously ଯେମିତି exam ରେ ହୁଏ, or else please don't take such kind of thing because ଏଥିରୁ ବେଶୀ କିଛି ତୁମକୁ learn କରିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, right? and ଏଥିରେ ଚलो ଯଦି answer evaluation ଠିକ ହଉଛି ତାହେଲେ then you can learn a lot, otherwise you take this kind of approach. ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କୋଉଠି ବସିକି exam ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ एटलीस्ट ଘରେ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर दियो, घरे बसी निजे डिसिप्लिन वे रे सॉल्व कर दियो. माने मु तुमको कहइथिली वन राउंड माने कोन, फर्स्ट दिन एसे, सेकंड दिन जीएस 1 2, थर्ड दिन जीएस 3 4, तापर 3 दिन मझे ब्रेक दे दो, तापर गोटे दिन चलो लैंग्वेज पेपर न लिखले नहीं ऑप्शनल 1 2 दे दो. सो दिस इज वन राउंड. ओके, एई भले जदी पारछो वन राउंड हेले भलो, टू राउंड हेले आउरी भलो, ओके, थ्री राउंड हेले एक्सीलेंट, बट आई डाउट वेदर यू विल हैव टाइम फॉर थ्री राउंड तो केबे हबो भी नहीं. सो ट्राई फॉर एटलीस्ट वन राउंड बिफोर द एग्जाम. सर थैंक यू सर मोर दीटा तीनटा आंसर कॉपी रहि जाइतला पेंडिंग हे जाइतला मु दिने लेट
ପରେ ସବମିଟ କରିଥିବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ କରିଥିବେ ଗୋଟେ ଅଫିସ ପାଇଁ ଡିଲେ ନା ନା ଲେଟ ରେ ଦିଅନି ସେ ସେମ ଡେ ରେ ଯଦି ମାନେ within time period ଯଦି ଦେଇଥିବ କିଛି ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି then we'll check it ଲେଟ ରେ ହେଲେ କଣ we don't want to encourage this kind of ମାନେ attitude ହବାର ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ତମେ ମରି ପଡିକି ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଲେଖ ଯାହା ବି ଲେଖିବାର ଅଛି imperfect ହଉ ପଛେ ଲେଖ ଅଦରୱାଇଜ ତମେ କଣ କରିବ ତମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଲେଟ ରେ ବି ଚେକ୍ ହଉଛି ତମେ ତ ହଁ ମୁଁ ଆରାମସେ ଦେବି 2 ଦିନ ପରେ and in any case suppose one day ବି ତମର ଚେକ୍ ହେଲାନି percent it's okay ଆମେ ଦେଖ ଆମେ around କୁହାଯାଇଥିଲା 55 around classes ହବ but actually if you see it will be somewhere around 60 to 70 or even more than that and 70 class ରେ you imagine if you are writing even 2 answers per day चलो ବେଳେ ବେଳେ ତୁମ ଆମେ 3ଟା 4ଟା क्वेश्चन भी ଦେଇଦେବୁ but suppose ଭାବ କି 2ଟା आंसर भी ତୁମ ମାନେ 2ଟା क्वेश्चन दिया ହଉଛି suppose out of 70 such classes if you have written even 60 class ର ତୁମେ answer ଲେଖିଛ 60 into 2 ମାନେ 120 questions you are writing daily answer writing this will create this answer writing skill which is most important या ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ ର evaluation ହେଲାନି then I don't think it's such an issue but ଯଦି time ଭିତରେ ଦେଇଥିବ and for our fault we have not evaluated then you can definitely mail us and କହିବ କି or personally ବି message କରିଦବ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା evaluate ହେଇନି get it evaluated but late submission କୁ will not evaluate so we also have to be strict about some things by the way let me tell you another funny thing actually initially ଆମେ ଯେତେବେଳେ course start କରାଯାଇଥିଲା you would have noticed କି daily answer writing ରେ ଲେଖା ହେଇନଥିଲା କି evaluation କୋଉଠି mention ହେଇନଥିଲା our initially ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କି daily answer writing ରେ question ଦୁଇଟା ଦିଆହବ and ତାର ଆମେ model answer ଦେଇଦେବୁ but then I realized ki chalo model answer is against my philosophy in general so I said ki rather let people write and we can evaluate it okay so evaluation is something that we are doing mane add on Shreyank sir is doing mane add on basis re କରୁଛନ୍ତି so but I said ki let's try to develop people's answer writing skill so it should not be as if ki ame just ଗୋଟେ content ପଢେଇ ଦେଇ ଯାଉଛୁ and god knows what you are learning so rather we want that you write something so that we also understand ଆମକୁ ବି ସେ ତୁମ answer ଆମକୁ ବି feedback ମିଳୁଛି କି whether how effective was our teaching right that is also helpful for us to understand चलो आज बहुत डाइवर्ट ହେଇଗଲା let's go back to this part okay so ଆଜିର chapter ହଉଛି security challenges in border areas so ଏଇ ଭଳିଆ question ରେ କଣ ଆମେ introduction ଲେଖିବା standard introduction कि ଆମର border area ର length ହଉଛି 7 ମାନେ coast line ହଉଛି 7500 kilometers ଆଉ land border India ର ହଉଛି 15000 kilometers so from this we are trying to say कि India has a very long border so that means when you have a long border that will create many challenges that is what we are trying to say okay. For example you see how geography affects countries security issues let me tell you very briefly although এটা this is from my own understanding এটা କୋଉ ଜାଗାରେ ଏମିତି କୋଉ material ରେ ନାହିଁ usually let me tell you something try to understand this suppose this is India okay this is Pakistan from security perspective if we consider about India and Pakistan okay, these are the oceans can you tell me which country is relatively safer which country has more issues relative to each other only from geographical perspective think and tell me कौन ଲାଗୁଛି ତମକୁ how geography affects security Sir, India in terms of both quantity and quality, because the border itself is, India रा border itself Pakistan to border plus Pakistan रा जो marine ना boundary see ଅଛି we are only talking about each other with respect to each other suppose this length तो जहाँ भी share ହେଇଛି पाकिस्तान संगे share ହେଇଛି so in that sense we have exact same amount of length ठीक ଅଛି पाकिस्तान इंडिया संगे ଯେତିକି share କରୁଛି इंडिया भी पाकिस्तान संगे ସେତିକି share କରୁଛି so we are ମୁଁ not କହିଲି talking about overall these areas କହୁଛି so from this perspective what do you think who is in a better position from defense perspective Pakistan or India due to geographical region we are not talking about other for example economy or for example who has more amount of arms and ammunition we are only talking about geography सर इन पाकिस्तान एडवांटेजेस पोजीशन में अछि okay why do you think so कारण सर से इंडिया को अटैक करिया चाहिले केवल गोटिए डायमेंशन ही फोकस करिवो किंतु इंडिया बहुत जगह तार बॉर्डर को प्रोटेक्ट करिया पड़िवो very good this is one perspective in which Pakistan is in a better position than India I agree
Can you think of another perspective where India is in a better perspective than Pakistan? ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ମାନେ ୱାଟର ଲେଭେଲରେ ବି ଆଟାକ୍ କରିପାରିବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି କରିପାରିବ। Excellent. So that means because we have longer coast, it a double-edged sword. हमको एठी पेट्रोलिंग करिया भी difficult, but simultaneously we have more area through which we will be able to attack, whereas you see Pakistan has a lesser exposure, right? So तामाने कोन हमको भी less area ऊपर नजर रखिया पड़ियो कि एठू suppose एठी ग्वादर पोर्ट अछि, we can आमे नजर रख पारे कि ई पोर्ट रु उठी केतळे आसुची ship, but they have to cover a larger area कि कोठो जाउची इंडिया रो naval ship. This is one aspect. Another aspect, try to understand. Initially ଯେତେବେଳେ ବି attack କିଛି ବି attacking position ହୁଏ, ସେତେବେଳେ usually the first attack is not at the ground level. First attack is usually through the air, right? And they will cover the air cover ସେମାନେ ଦେବେ or support ଦେବେ for the ground invasion or ground level ର ଯୋଉମାନେ armed forces. So here actually India has a huge advantage, not only with respect to Pakistan but also with respect to China. The reason is with respect to Pakistan, you see, ଆମେ ଏଇଠି ବି ଯେତିକି ଆମର military air bases ଅଛି, that have a lesser length to cover, right? Because ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି parallel way ରେ ଏମିତି ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି immediately କୋଉ area ରେ ବି ଯାଇକି you can strike. But Pakistan also have, ତମେ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ with the same area exposure ଅଛି, but they will have to move to a longer area to target other parts of India, right? So in that respect we have some advantage. With respect to China, advantage of Indian Air Force is that our ଆମ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଡରଟା ଅଛି ନା, ଆମ ବର୍ଡରରେ ଆମ ସାଇଡଟାର elevation ହଉଛି lower less, ତାଙ୍କ ସାଇଡରେ elevation ଟା higher, because this is the higher, if you remember तिब्बत ଟା higher elevation ରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କିଛି higher elevation ରେ ଥାଏ, ସେଠି ତମେ ଯାହା air strip और ଯାହା ବି ତମେ air force ର ବନେଇବ, ମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନେଇବ, ସେଥିରୁ ଯୋଉ fighter jets take off କରିବେ, ତାଙ୍କର payload capacity କମିଯିବ because of this elevation, right? Because they will have to spend more fuel to counter this gravity, whereas for the same ଆମେ ଦେଖ ଅଳ୍ପ ଟିକେ distance ରେ ଅଛୁ, because this is at the lower elevation, therefore ଆମର ଯୋଉ fighter jet ମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ higher payload ସାଙ୍ଗେ ଯାଇପାରିବେ ତାଙ୍କ area. So this is, try to understand how geography is affecting our security. Similarly, if you see this recently भी जो गलवान class ହେଲା, गलवान वैली रे जो इंडिया और चाइना भिତରେ जो fighting ଟା ହେଇଥିଲା, so there also you see in many other cases also, see, in this case for example they had the element of surprise ସେମାନେ ଆମକୁ କଲେ ବୋଲି it is expected, or some people are saying that the casualty of India is higher than China. We are disputing that, that's a different story, but କଥା ହଉଛି କି ଏଥିରେ ଆମକୁ surprise କରିଦିଆ ହେଲା। But in other cases where you see कि ଯୋଉଥିରେ inusual ଯୋଉ hand to hand fighting ହଉଛି, ଚଲ ତାର reason ବି ମୁଁ ପରେ କହିବି। ତାର ଭିଡିଓ ଯଦି କିଛି ଦେଖିବ କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୋଲଜର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋଲଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟକ୍କର ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାଇଟ ରେ, ଓକେ, ଯୋଉ ଧକ୍କା ମରାମରି ହଉଛନ୍ତି। ତାର ରିଜନ କି ସେମାନେ ଏଇ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ସୋଲଜର ମାନେ ଆକ୍ଲାମାଟାଇଜ ନୁହନ୍ତି, ଓକେ, ଏଇ କ୍ଲାଇମେଟ ଆଉ ଏଇ ଏଲିଭେସନ। whereas because ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମ ସୋଲଜର ମାନେ ଏଠି ତୈନାତ ଅଛନ୍ତି, so therefore they are better acclimatized to the local area and they are better able to respond. So these are many ways in which geography will affect security. तो आमे इतने सारे dimension तो आमे पढ़ियो नहीं, आमे overall गोटे dimension नु पढ़ुचे। But these are usually the practical things. If for example in interviews also they might ask you, so there you have to talk about practical things. There you cannot tell the interviewer about some generic points कि sir you know हमें capacity building develop करिया, so they will say कि अरे चलो ये mains में लिखी से सब आश्चर्य, tell us कि what are the practical issues which is happening. Okay. So these are some understanding that you can also develop if you follow the newspaper regularly or the audio, okay, overall detail analysis articles specifically or the editorial would have also audio, then you will be able to know ki what's the ground reality there, okay. So anyway, so this is the introduction ki amaro India ro बहुत ही long border अछि, so long border माने challenges भी बेसी अछि हमर, okay. Now we are saying that we share our land boundary with 8 countries and this comes with a caveat. This comes with a terms and condition. I will explain what this means. So who are our neighbors? First is Bangladesh. So and I have written ki tankara kiye border guarding force along this border kiye achan, right? So Bangladesh sangre amar jo border guarding force, that is BSF, and this is our longest land border. So India shares the longest land border with Bangladesh. Tapre ashi China. China case achi both ITBP and SFF.
Special Frontier Force, also sometimes known as Vikas Battalion. ये सब से नोट रे अच्छी डिटेल इच एंड एवरी यू नो फोर्स विषय रे बहुत डिटेल अच्छे बहुत ही भलो भलो जिंस फॉर एग्जांपल इफ यू नो दिस एसएफएफ और विकास बैटालियन इट्स अ वेरी यूनिक बैटालियन. This has been drawn from the refugees who came to India in 1950s. ଯେତେବେଳେ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସାରା ତିବେତାନ ରିଫ୍ୟୁଜି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କୁ ରେଫ୍ୟୁଜ ଦେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିକଜ ଚାଇନିଜ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଟୁକ୍ ଓଭର ତିବେତ. ସୋ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ମାନେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ବିକାଶ ବାଟାଲିୟନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ. And for a very long period, this was a very secret, India's almost the most secret unit, armed force unit. Okay, and only recently, only after Galwan crisis, they were used for the first time. ସେମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅପରେସନ ରେ ୟୁଜ କରାଯାଇଥିଲା. ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅପରେସନ ଅନ୍ ଦ ବ୍ଲାକ୍ ଟପ୍, ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ ଟପ୍ କୁ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିନେଲା in retaliation of Chinese incursion, ସେତେବେଳେ ବିକାଶ ବାଟାଲିୟନ କୁ ୟୁଜ କରାଯାଇଥିଲା. Right? Each and every, if you see this, each and every force will have very unique history, where they come from, why they were created. So that itself is very interesting. But they, and तुम यदि note हिसाब से ताकि पढ़ियो boring लगे. So go through the history, you will find it more interesting. Okay. Similarly, Pakistan संगरे कौन अच्छी? Border Security Force BSF. Myanmar border रे अच्छी Assam Rifles AR. नेपाल संगरे अच्छी सशस्त्र सीमा बल. नेपाल भूटान दुटा को गार्ड करछि सशस्त्र सीमा बल. Now Afghanistan along चलो Afghanistan along रे कौन सी हमारा border guarding force नहीं. Who can tell me what's the reason? सर बहुत हाइट है Sir, बहुत हाइट रे अछि. actually, no, sir, actually, that part is POK ଟା connected with ପଳଉଛି POK. ସେଇଥିରେ ସାର୍ Yes, anyone? POK ଟା ପଳଉଛି ସାର୍ ସେ Very good. ଇଣ୍ଡିଆର ସେ ପାର୍ଟରେ The reason is कि see, actually Afghanistan संगे इंडिया रा थोड़ा ना contact अछि. We are claiming कि जो POK भी हो गिलगिट बल्टिस्तान को हमें जेहेतु claim करूचे. This is because of गिलगिट बल्टिस्तान. We are claiming गिलगिट बल्टिस्तान as part of Kashmir, right? But point is that is under the de facto control of Pakistan. In fact, Pakistan, I think 1 or 2 years ago, Pakistan ta कोड special province रो provision देला and they started having election there also. We'll also talk about that in a bit. सत्रे issue कौन अछि. So due to that reason, actually India रो Afghanistan संगे direct link नहीं. But हमको कौन हमको historically से claim टा को maintain करियो पड़ियो just in case in future we want to have any claim to that place. So for that reason, officially, this is officially Afghanistan is our neighbor also, but actually practically Afghanistan रो India संगे direct link upon the right. So for that reason, जेहेतु हमारा practically नहीं तेणु से टिके ही ना because in between there is Pakistan occupied territory. Similarly, Sri Lanka. Now tell me what's the issue with Sri Lanka? Is there any land boundary with Sri Lanka? India Sri Lanka रो land boundary कौन अछि? चलो इठी तो आंसर ही अछि. You see this. So this is Ram Setu or Adams Bridge. Don't think it a mythological thing or something in the answer लिखियो बनी. This is well established. कि यार डेप्थ भी दिखाई छी कि इट इज वेरी पॉसिबल कि जो लिंक टा थिला ना इट्स वेरी पॉसिबल कि मे बी थाउजेंड्स और 10,000 इयर्स अगो इट्स पॉसिबल कि यार एटा होची माने सरफेस सी सरफेस लेवल ऊपर थिला which was providing a continuous land bridge between India and Sri Lanka. It might have happened कि in between किसी जगह ब्रेक है थी and maybe in that in those break points that mythical story might have happened where they had to cross the sea. So it was still it is a very shallow sea. ये नियर बाय एरिया से जो देखियो यार डेप्थ बहुत अधिक अछि एथि गोटे लैंड टा अछि. So through this we are saying this is also a land border to Sri Lanka. So who is going to माने अच्छा by the way can you tell me कि what could be the reason कि एबे एरिया टा अछि sea level तळे? What could be the reason? Sir, global warming, sea level rising. Very good. Global warming, due to global warming sea level rise ହେଇଯାଇଛି. So maybe that might be one of the reasons. Okay. It is also known as Adams Bridge. So right now because this bridge is under the water, so therefore it means कि चलो boat फोट भी इतने आराम से यहाँ ऊपर जाई करिए तो depth को एबे चली जाई. So but point is who is going to guard this land border? Indian Coast Guard ICG. That's the point. So technically that means officially we share land boundary with 8 countries, but practically only with 6 countries. Okay. You see here these are the
main border guarding forces, BGFs: BSF, ITBP, SSB, Assam Rifles. Now come to this part. मैप टा देखि दो ओवरऑल कहार केते किलोमीटर इंडिया कहा संगे शेयर करछि बॉर्डर. ओके, नाउ कम टू दिस पार्ट, मैरीटाइम बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. सो जेमति हम लैंड बॉर्डर शेयर करछु 8टा कंट्री संगे, समथिया मैरीटाइम बॉर्डर्स को कंट्री संगे शेयर करछु. मींस मैरीटाइम और इन बिटवीन ओशन जा भितर अछि और सी जा भितर अछि. हु आर दोस कंट्रीज? So first and foremost, Sri Lanka sangre, obviously it is our longest maritime border. So किछि islands and news ता संगे मु लिखि देछि, if you want you can research on them, but ठीक है, they will not be asked. Okay, for example, if you see Kachativu Island, Kachativu Island, why is usually it is in news? Can you tell me? Newspaper, if you follow newspaper Fisherman regularly. issue. Excellent. So what's the fisherman issue? Can you tell me in short? So ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର maritime boundary କୋଉଠି, ତ Right. ସେ ଇନିଗ୍ରେଟ ମାନେ ପଳେନ୍ତି. So ଯେମିତି ଏଇଟା RS Kachativu ଦେଇଛନ୍ତି. Island ଟା very good. Kachativu Island ଟା ଏମିତି ଗୋଟେ in between ଅଛି. Okay, so India और श्रीलंका in between ଅଛି. इंडिया रो स्पेसिफिकली तमिलनाडु रो फिशरमैन, तो ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ डीप सी को जाती फिशिंग କରିବାକୁ, समटाइम्स दे गो टू दिस आइलैंड आल्सो. चलो ये आइलैंड रो हिस्ट्री भी बहुत लंबा अछि. आगरो इंडिया also had right over this island completely, then it ceded control to श्रीलंका को दे दिया गला एटा. बट एटा कुआ हितला कि इंडियन फिशरमैन कैन गो अप टू दिस एरिया, बट मेनी टाइम्स इंडियन फिशरमैन विल क्रॉस दिस एरिया एंड तांकर जो श्रीलंका नेवी अछि तांको धरि कि नै कि अरेस्ट करके श्रीलंका को नै निया. And this is actually a huge political issue in Tamil Nadu. You must have known this. Usually हुए कौन, तमिल फिशरमैन को श्रीलंका बांधिनी कि नहीं जीवो, तापर तमिलनाडु रे प्रोटेस्ट चलिवो. तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट विल ट्राई टू प्रेशराइज सेंट्रल गवर्नमेंट कि तुमे कौन करो, तुमे जाके श्रीलंकन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करो, समान को बाहर करा जाओ. So ये सब यात्रा दुनिया continuously चलता है. Because of this, usually Kachativu Island is always in news. So similarly, research ki which island is usually for which reason it is in news. Sir Creek Island also will tell you in short ki kahin ki news re usual tha. Okay. So overall, we are sharing this maritime borders with India. Bangladesh sangre specifically ko area tare achi. Sundarban is something that we share with Bangladesh. Entire Sundarban is not in India. In fact, I think around 40% is in India, 60% in Bangladesh or something like that, or reverse. Okay, and the 40-60 divide each. Okay. So this shallow sea also we are sharing with Bangladesh. Now come to this part, India's maritime security forces. So our depending on actually issue टा sea रो को part रे होची, depending on that we have different security forces. For example, जदि open sea रे होची, open sea माने कौन? Everything is defined in terms of nautical miles or distance. This is called NM. So distance from the coast or shoreline. Specifically, it is called shoreline. So this is our shoreline, right? एथुरु केते डिस्टेंस रे को सी अछि, depending on that it is considered that kind of sea. So for example, in the open sea is 200 nautical miles ru दूर रे जोटा माने beyond रे जोटा अछि ओटा कंट्री जा सेटे की ऑपरेट करियो, only Indian Navy will operate. In between coastal माने shoreline to up to 200 nautical miles, this is an area known as exclusive economic zone, EEZ. Within this EEZ, Indian Coast Guard or ICG is competent to patrol this area. And within the less distance, shoreline to 12 nautical miles, the state coastal police, depending on whichever state, suppose Odisha, suppose Andhra Pradesh, so tankar coastal police, they can patrol it. Right? So in this way, it has been divided. Now, who can tell me what is the reason for this such kind of division? कौन reason है पर what do you think? सर सेଠିକାର ଯୋଉ ଥାନ୍ତି ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଥାଏ ସେଠିକାର ଏରିଆ ଡିଟେଲ୍ସ, ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଜି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠିକାର Okay, ଷ୍ଟେଟ ପୋଲିସକୁ ସେଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରାଯାଇଥାଏ. okay, yes, that is also one point कि state coastal ମାନେ ସେଇ state रो ହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବା better कि ତାଙ୍କର shoreline ରେ କଣ ଅଛି, କଣ issue ଅଛି. I'm asking कि
स्टेट ए भला जो ग्रेजुअल लेवल कहीं रखा है स्टेट कोस्टल पुलिस तापर आईसीजी तापर इंडियन नेवी सर Sir, I think till सर रिसोर्स ପାଇଁ ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକା ରିସୋର୍ସ ନେଭିରେ ଅଛି ତ ସେ ଓପନ ସି କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ। sir, I think till 12 nautical mile it will be territorial water, so it will be the part of that state's extended territory, and after that till 200 nautical mile is the extended economic zone, which is to the national territory, so it will be under Indian Coast Guard. सर Okay. till 12 nautical mile माने इंडिया रो टोटली माने कंट्रोल अच्छे बट till 200 nautical mile माने Correct. between 12 to 200 तो सेटा माने नो माने इंटरनेशनल शिप को भी हमें पैसेज दो माने we do not have the right to Right, right, say no to the passage of sea तो right, ताकू right. तो नेशनल लेवल रे ही हमें हैंडल कर परिबा सो दैट्स व्हाई आई सी बिकॉज़ Okay, यारो बहुत ही हाँ हाँ I got it. So you have read I think unclose वाला चैप्टर में भल से पढ़िছো, right? yes you are Different right इति yes by the way एथिरे भी डिटेल ले अछि, so you can go through this also. This is the division. Okay. But यारो बहुत ही simple answer हो कि because not because of resource, because different forces will also have different level of expertise. That is more important. Expertise is more important. And expertise काहे की important इथिरे? Because what kind of threat are we expecting at what level? ओपन सी रे कोन देखो ओपन सी रे स्टेट एक्टर्स माने आसी स्टेट एक्टर्स माने अन्य कोनोसी कंट्री रो नेवीज आसी तुम अन्य कोनोसी कंट्री रो नेवी संगे स्टेट कोस्टल पुलिस को एटे पठै दो ओडिसा पुलिस को यदि एटे पठै दो कोन हो से शेप को यांकर जा बोट थियो यांकर पूरा एटी एयरक्राफ्ट कैरियर आसी थियो एमाने बोट नहीं छोटो बोट नहीं कि पेट्रोल करे जिबे यदि कोन अवस्था हो कैन यू अंडरस्टैंड so regarding माने depending on what kind of threat we are likely to face we have that level of expertise वाला फोर्स को हम सेतु पठै सिमिलरली आईसीजी को जो ईईजेड भितर हम कोन कोन इशू होई पारे वी एक्सपेक्ट कि रीजनेबली को टाइप रो चैलेंज हम पाखु आसी पारे अकॉर्डिंगली वी विल हैव दैट काइंड ऑफ फोर्स फॉर एग्जांपल आईसीजी रो मेन चैलेंज हला वन तो हला देखो नेवी रो मेन चैलेंज हला अदर कंट्रीज मानकर नेवी आसी पारे पायरेट्स माने आसी पारंती ओके international pirates so that is also very threatening ICG to some extent it can also deal with pirates but mostly it will deal with illegal fishing for example it will chalo illegal fishing state coastal police भी कर दे पारियो sometimes illegal fishing and in other cases अन्य countries जो किसी normal innocent passage जदि हो तो okay so there also it can challenge जदि drugs किसी trafficking हो तो human trafficking हो तो so for these it is competent स्टेट कोस्टल पुलिस कोन सब पर छोट मोट जिनस को ताको हैंडल करे स्टेट कोस्टल पुलिस अछि फॉर एग्जांपल लोकल फिशरमैन किछि इशू हे गला किछि लोकल क्रिमिनल माने किछि ट्रैवल करूछन्ती कॉन्ट्राबैंड किछि चालान होछि depending on different competency level different abilities we have different forces right Indian navy ro you imagine what are the level of weapons and forces they have and you imagine what are the level of weapons would be with ICG and with state coastal police that is the region okay now the next thing is if you want to go into detail easy corner exclusive economic zone you can refer to this diagram कि for example हम land boundary भितर जति एरिया थाए ताको internal waters कहंती 12 nautical miles भितर जो एरिया टा थाए ताको territorial sea कहंती एठी state coastal police एठी patrolling करे 12 nautical miles रू by the way 12 nautical mile रू आ किछ एरिया को contiguous zone कहंती जोथरे कि suppose एठी गोटे chase start हला ताले state coastal police can go up to this area also okay now exclusive economic zone होची 200 nautical mile पर्यंत shore line रू यारो पॉइंट कौन एथिरे कौन कौन नेचुरल रिसोर्सेस मरीन नेचुरल रिसोर्सेस यू कैन एक्सेस ऑल ऑफ दीस थिंग्स यू कैन रीड इन बेल करंट अफेयर्स रे ईजेड आसे अनक्लॉज और ईजेड आसे यू कैन गो थ्रू दैट otherwise it is not under the scope of mains perspective usually you will not be asked right I am kindly bhej dele I should have written this unclause ईजेड इशू केस आसे unclause हला UN convention on laws of the sea ठीक है अच्छा I was going to erase these parts ठीक है now आमे तापरे marine security ऊपर परे भी देखियो I think let me just check it okay yeah so before that just refer to this map and try to understand कि हमरो main land border issue रे को border को type रो border हमको main usually highlight रे थाई कोठी usually issue हुए first and foremost
you know that most people know this LOC, line of control. So this is between India and Pakistan. Okay. Now try to understand this entire length is not LOC. In fact, जो green part का देखो, this is international border or international boundary IB. Only this part is line of control, which is usually in Jammu and Kashmir. Okay. Similarly, you see this part. This part is जो line of actual control लिखा है LAC. Only this part is LAC and again small this part is LAC. Now the rest part, for example, चलो एटा entire part नो एटा map टा टिके wrong अछि. এই part टा LAC नो. This is international boundary. This is not LAC. Okay. And again, this is also not LAC. This is McMahon line. Now, very simple thing I want to ask you: why do we have such different names given to different borders? And what is the difference between international border and other borders in which we have given a name? For example, where we have given McMahon line, okay, where we have given the name LOC, LAC. What is the difference between IB and LOC, LAC? Can you tell me? सर आईबी रे माने both the parties agree कि तांकर boundary कोड अछि but in Very line of good. control रे माने those who actually control माने सेटा disputed ଆଉ for example LOC सेट लाइन रे से जाय जो माने पाकिस्तान से जाय कंट्रोल करछ और इंडिया से जाय कंट्रोल करछ but Very that good. is not agreed upon by both the parties. Excellent. So, is it also the same case with LAC? I think yes. सर एलएसी वार कौन? सर एलएसी जो वार पर शायद ହେଇଛି जो 1962 पर. Right. So before going into all of this thing, so I want you to understand this concept. Usually I always keep on telling you that concepts are more important than information. So the first concept that we are going to understand today is that all type of international borders are not the same. In fact, broadly, we can call borders to be two types. One is international boundary, IB. Another is other disputed boundary or disputed borders. Usually जहाँ भी special नाम जहाँ जहाँ थिबो सेगुड़ा देखियो सेगुड़ा usually थाए disputed borders, not always. Okay. International boundary तमाने होची सही boundary which is settled. This is settled or agreed between both parties. Disputed borders होची which is unsettled boundary. Okay. Unsettled border, that means some kind of disputes एते अछि. So सबु even within the same neighbor will not have, in every area will not have dispute. এই entire area रे हमारा dispute नहीं. So this has become international boundary. So both Pakistan will recognize, yes, this is my line. India will also say this is my boundary. But here there is disagreement due to many historical reasons. केबे कोठी fighting हेतु war हेतु. So आमे for example we have lost this area to Pakistan जोटा को आमे POK कहउछो और आजाद कश्मीर जोटा को आउछ. ସେମାନେ ସେମିତି contest କରୁଛନ୍ତି এই area ଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି India occupied Kashmir. So now there is a dispute. So because of that we have given a name to this boundary, and this boundary usually comes to reality only usually after a war or any sort of short break in the war jaku cease fire हम को तापरे जी practically जो साइड जति पर्यंत कंट्रोल कले, now that becomes a initially a de facto kind of boundary. Okay, जोटा को समाने एग्री करिवे कि चलो किछि टाइम पय हमें आउ फाइटिंग करियनि तापरे धीरे धीरे कोन हे जे ताको गोटे स्पेशल नाम दे दिया जे LOC और LAC की जाबे. राइट. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन ग्राउंड रियलिटी इस जिंस हुए. So similarly, where you see the green lines are usually settled boundaries. Okay, जो अन्य color line गुड़ा अच्छी, these are not settled. McMahon line, this is not settled. Okay. For example, this part, China is claiming कि this part Arunachal Pradesh, entire Arunachal Pradesh को China claim करुची. China is calling it as South Tibet. So someone said कि Modi ji should also call Tibet as Northern Arunachal Pradesh. आमे China को कहिया North Delhi कहिया, ठीक है. So name game point is it's not just a name game. Okay. The point is कि अच्छा can you tell me कि यार point कौन आमे एमते सब claim करिया point कौन? Is there any claim to this, माने any point to this? एबे कहया कि यार अरुणाचल प्रदेश तो इंडिया अंडर रे अछि, तो आमे तो अरुणाचली माने एठी अछन, आमे हमर तो फुल कंट्रोल अछि. तो चाइना जहा क्लेम कले हेतरे कोन इशू हे गेला, हमर किछ जाय से. What do you think? सर से लोकल लोकंकर परसुएड हे जिवे, कॉग्निटिव डिसोनेंस हे जिवो तांकर.
cognitive dissonance ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ବାର ବାର ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଚାଇନା କହିବ କି ତୁମେ ହେଲା ଚାଇନିଜ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି କାଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। Is it what you feel? Yes, sir. Okay, it's also one ତାଠୁ possibility. ଅଧିକ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି I don't know how to explain, but एमती से बहुत सारे एमती विलेज को भी से रीनेम करे माने टाइम टू टाइम चाइना अरुणाचल प्रदेश रा विलेज को भी रीनेम करे तो Right. तो एटा भी गोटे टाइप रो डॉक्यूमेंटेशन से करूची फॉर द लेटर स्टेज कि माने देखो माने मु एगुडा करिछि बोली आई डोंट नो माने मु एटा पैरेलल ड्रा करछि Okay. फ्रॉम द मूवी शॉशैंक रिडेम्पशन बिकॉज अपन देखिते से बारंबार एमती लेटर लिखि से गोटे फिक्शियस कैरेक्टर क्रिएट कला तापर से नीचे सेटा लीव कला तो आई डोंट नो मे बी Very good. दैट इज द that is Very one of good the reason. reasoning. Any other reasoning? Others? Can you guess? What's the point? Sir, maybe to have a like a what you say, like a kind of a international soft space pressure in international forums, that this is there is Okay. a Yes, definitely. সেটাই ভাবো। What else? Yeah, someone was saying something. yes, sir, the sentiment of the people, because in border areas line the ethnic groups and the tribals, they are not very strictly separated. ତାଙ୍କର କିଛି Right. ଗ୍ରୁପ ଏପଟ ସେପଟ ରହିଯାଇଥିବ ତ ତାଙ୍କୁ କନସୋଲିଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ The main reason you see is because of this thing. Suppose you have an ambition to an area. Suppose तुम गोटे area encroach କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, तुम घर side କିଛି ଗୋଟେ government area ଅଛି। By the way, don't think I'm ମାନେ misleading you or something. Usually what people do କି people ଲୋକମାନେ କେମିତି government area encroach କରନ୍ତି, first ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଘର side ରେ ଯୋଉ area ଥିବ ସେଠି କଣ କରିବେ, କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଏଠି ପକେଇକି ରଖିବେ, ବାଲି ଫାଲି କିଛି ପକେଇକି ରଖିବେ କିଛି ଦିନ। ତାପରେ କଣ କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟାର ବାଡ଼ କରିଦେବେ। ରାଇଟ୍, କେହି କିଛି ତାପରେ କହିଲେନି। ତାପରେ କଣ କରିବେ, ସେ କଣ୍ଟାର ବାଡ଼ଟାକୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ କଂକ୍ରିଟ କି ଇଟା ପଥରର ଗୋଟେ କରିଦେବେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି। ତାପରେ କଣ କରିବେ, ଏଥିରେ ଘର ତିଆରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, so gradual encroachment, if you have this long term plan, so what you need to have is that you need to have historical or continuous claim. Suppose continuously ମୁଁ last 30 years ହେଲା ଏଇଠି ରହିଛି, ତାପରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କି ଆମକୁ ଏଠୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ କରାଉ, ଆମକୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଦିଆ ହଉ, ବିକଜ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହୁଛୁ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ if you are posted as ତହସିଲଦାର, you will see କି very funny thing you will experience. Some people will come to your office and they will say କି sir ମୋର ଟିକେ ଚାଲାଣ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତମେ କହିବ କଣ ଚାଲାଣ କାଟିବେ, ସାର୍ ମୁଁ ଏନକ୍ରୋଚ କରିଛି ଏଇ ଜାଗା, ମୋର ଟିକେ ଚାଲାଣ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତମେ କହିବ କି ବାବୁ ଆପଣ ଏନକ୍ରୋଚ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିକି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଚାଲାଣ କାଟିବାକୁ, why are you saying this? The point is ki the person wants some evidence also to be there ki this person has continuously occupied this area, and usually there is this thinking ki ଆମେ ଯଦି 30 years continuously encroach କରିବା, then finally we can apply under OPLE act ଆଉ under ଆଉ ବି ଗୋଟେ କଣ act ଅଛି, prevention of land encroachment act under ବି ହେଇପାରେ। ଯେମିତି eviction ଗୋଟେ option ଅଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ option ଅଛି କି eviction ବଦଳରେ so tahsildar or sub collector depending on the situation they can also regularize this, they can also give this place to this person if the person is deserving. For example तार यदि बीपीएल कैटेगरी ହେଇଥିବ और तार यदि କିଛି landless ଥିବ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ regularize ବି କରାଯାଇ ପାରିବ। So in this hope they will come to your office and they will say କି ଆମର ଚାଲାଣ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। So they are asking you to fine them. point ହେଉଛି କି ଏମାନେ fine ତ ବହୁତ କମ payment କରିବେ, but they think କି over a long period of time ସେମାନେ କବ୍ଜା କରିନେବେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ। So similar thing is here, if you keep on continuously claiming an area, then maybe after 50 years, 100 years, you'll have this series of continuous claims, and then you will be able to capture this area and you will be able to justify it. Okay. That is the reason. Don't think it is just a name game or something. That is also why it is very dangerous. You should not cede control to this kind of thing. Okay. ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ କାହିଁକି ସେମ୍ ଜିନିଷ କରୁନି, ତାର ବି ରିଜନ ଅଛି, but the reason of China to do this is this. Okay. ବୁଝି ହେଉଛି ଏଥିରେ? Okay. Now let's go to border management in India. तो इन जनरल कौन पचरा हो तुमको क्वेश्चन गोटे थीम आसीबो कि बॉर्डर मैनेजमेंट रो इश्यूज कौन कौन थाए आउ व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन, राइट? सो आई थॉट कि इश्यू संगे सॉल्यूशन लेट्स ट्राई टू स्टडी इट टुगेदर, सो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इश्यू कौन अछि तारो सॉल्यूशन कौन अछि, एंड बहुत ऑर्गेनिकली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि
कहा संगरे कौन लिंक अच्छी. So I have divided this into different sections. For example, first it is geographically related. So what are the geographically related issues in border management in India and what could be the solutions? Accordingly, what could be the solutions? First and foremost, तुम कहो कि इंडिया रा होची long and porous border. Long and porous, long border तो बुझी होची porous border माने एंती मजरा मजरा कणा अछि means जोटा को पेट्रोलिंग करिया difficult. So for that here, suppose here you have patrolling, but एठी किसी जने आसी पहुंच because ए पार्ट टारे पेट्रोलिंग करिया डिफिकल्ट हे पारे. Specifically think of, for example, India Pakistan border रे think of Rajasthan. Rajasthan भी it is also bordering Pakistan. Now एठी desert अछि, desert रे पेट्रोलिंग करियाटा बेसी difficult. Now this will create a porous border, right? So एथिरे infiltration करियाटा easier. So because of this there is an issue. Now there is a varying topography also. Varying topography माने कौन? माने इंडिया रा बॉर्डर एरिया गोटे सिंगल टाइप रो एरिया नो. इट्स नॉट लाइक कि सब एरिया बॉर्डर एरिया टा प्लेन एरिया. तो को जगह रे प्लेन एरिया रा अछि, कोठी डेजर्ट अछि, कोठी माउंटेन अछि, कोठी रिवर अछि, राइट, कोठी ओशन अछि. फॉर एग्जांपल इफ यू सी एठी जो गुजरात बॉर्डर टारे एठी भी पाकिस्तान लागी छि. एठी गोटे सर क्रिक बोली अछि. सर क्रिक हला ताकर जो चैनल गुडा जोथरे सलाइन वाटर ए भितर को आसे. So this is also a boundary between India and Pakistan. Now imagine पंजाब रे suppose plain area अछि, राजस्थान रे desert अछि, गुजरात रे हमरो ए बळा saline area अछि. केते varying topography अछि, right? माने different type of landforms अछि जोथरे हमरो boundary अछि. So that is also a challenge. ताको पेट्रोलिंग करिया challenge. For example, जदि आमे desert रे गोटे type रो force पठेया, ताको गोटे type रो गाड़ी देई पठेया, river रे जिवा पे ताको आमे समान को गोटे बोट दबा, ओशन ने जिवा मे भी ताको शिप दबा, माउंटेन ने जिवा को चलो कोन दबा ताको माउंटेन ने भी ताको गाड़ी दबा, right? So are you able to understand? Because of different terrain you will have different challenges, right? Similarly, there is a lack of proper demarcation in many border areas. कि exactly कोटा आमो एरिया कोटा तांको एरिया किसी जणा पड़ेनी. सपोज इटे माउंटेन भले एरिया अछि और किछि भी एंती जगह सब जगह रे हमर फेंसिंग नै. फेंस एवं सब जगह रे तयारी करा भी जाय परियो. जोटी फॉर एग्जांपल रिवर अछि एटे फेंस केमते तयारी करी, right? So there is a lack of proper demarcation. And finally, for the fourth problem is that there have been artificial boundaries created by Britishers. For example, if you see this Durand line, McMahon line. Now, what is the meaning of this artificial boundary? The meaning of this boundary is that if you, for example, if you do this exercise, as a class पर है Africa रा map देखियो, okay? And I'm sure that many of you would also have seen this map. No, no. So, what do you notice in Africa map? Can you tell me? देखिए बहुत सारा कंट्री ये उधर पूरा एमती single स्ट्रेट line लाइन. है. Yes, have you Straight seen line this? sir. So can Yes, you sir. imagine a straight line asila kodu? Is it a natural boundary? This can never be a natural boundary because natural boundary जेतबे वो दुटा कंट्री भीतर हुए, it will usually follow maybe a river, it will follow a mountain, right? So for that माने example कौन? For example, think of Doki River. Doki River is the natural boundary between India and Bangladesh. One side there is India, one side there is Bangladesh. By the way, I have been to this river, very beautiful river in Meghalaya. If you visit Meghalaya, you can go to this river, the boundary between India and Bangladesh. So now this is a natural boundary. But ब्रिटिशर माने आसिले, ब्रिटिशर माने कौन कहले, सीधा एटी स्केल पकेले, कहले कि एबे एटा हेगला तुम बाउंड्री, एटा हेगला तुम बाउंड्री, right? So due to British legacy also we have such kind of difficult artificial boundaries. For example, if you see this Durand line, ये जो this is the Durand line, okay, Pakistan Afghanistan line, which is also connecting Afghanistan with India. Now this is also an artificial line. आमको पचरा ही नतला कि कोटे ड्रॉ करा. दुरान बाबू आसले से पहले कि मत लागो जे ड्रॉ करिया कथा सीधा ड्रॉ कर दी धरा देले मैप. Similarly, McMahon line also. See, in none of these lines जोड़ा British era रे हितला, Indian मान को representative मान को पचरे की करा जाई नतला. British और माने directly they went and they dealt with the other country. For example, they dealt in case of McMahon line, they dealt directly with China. In case of this line Johnson and McDonald line, they were directly dealing with government of the then government of Tibet as well as China, and from India there was no representative. Who was representing India? Britishers. So ये जो मन इच्छा से मैंने boundary draw कले, that is also an issue, artificial boundary. Now the point is ये सब जिनसर
solution कौन ही परियो geography related solution कौन ही परियो तो first and foremost we should try to follow natural boundaries rivers mountains ये सब जगह रे हमें boundary draw करिया सेकंड है कि जो जो एरिया रे भी हम disputed borders अछि ताको हमें border agreement through रे we try to convert this into settled boundary means unsettled boundary को हमें settled boundary करिया ताको international boundary रे convert कर दो for example LOC LAC these are all unsettled boundaries so through diplomatic talks you could try to convert this into international boundary right similarly जो जो जगह रे for example enclaves अछि से जगह रे we will exchange the enclave and we will simplify the boundary so you might have known this is the meaning of enclaves तुम जानथियो आगरो इंडिया और बांग्लादेश भितरे enclave रो माने हला suppose you think that this is the normal international boundary but problem is that due to historical reasons एटार maximum part तो चलो इंडिया रे अछि बट मेनी पार्ट ऑफ सपोज ए भितर भितर ए केतेगुडा एमती जगह एगुडा थिवो इंडिया रो सिमिलरली ए भला एमती किछि खोपचा खोपचा जगह थिवो बांग्लादेश रो राइट सो व्हाट वाज द रीजन इफ यू सी हिस्टोरिकली एमती रीजन अछि फॉर एग्जांपल सेटिकार लोकल लैंडलॉर्ड जो माने थिले जो किंग्स माने थिले से माने बहुत टाइम रे एमती गैम्बलिंग करी कि से सब एरिया को अन्य किंग मान को हरै देउते तो कंट्रोल तांका पाकू पळै होतला याको आगु चित महल को होतला चित महल so suppose india ro king कोडी एबडा हारि गले तापर ए एरिया टा को दे देले तांकर राइवल किंग so now this came under the control of bangladesh then gradually कोन हला किंग मानकर राजनीति सब सरी गला तापर ब्रिटिशर्स माने भी आसी ताको फाइनलाइज करले नाही एंड माने पार्टीशन टाइम रे ही इंडिया बांग्लादेश भितर एमितिया किछि एरिया रहि गला जोटा कि बाकी सराउंडिंग एरिया गुडा इंडिया रो एरिया बट मझे एमितिया किछि एनक्लेव अछि व्हिच इज बिलोंग्स टू बांग्लादेश सिमिलरली some enclaves of bangladesh inside bangladesh some enclaves belongs to india now if you understand ଆମର 100th constitutional amendment act जोटा हला this was the land boundary agreement या थ्रो रे कोन कले इंडिया और बांग्लादेश तांकर एनक्लेव को एक्सचेंज करा करी हल मींस एथिरे जो छोटो छोटो एरिया थिला इंडिया कला नाउ यू टेक कंट्रोल ऑफ दिस एरिया मो एरिया रे जो छोटो छोटो एरिया अछि ताकू मु कंट्रोल रे नहीं होछि एंड फाइनली दे ड्रू अ लाइन इंटरनेशनल बाउंड्री पता या द्वारा बाउंड्री भी टिके एपट सब चेंज हला बट इट इज बेटर बिकॉज़ एबे सराउंडिंग एरिया भी सब सेम ही हला now this is like this india beta bangladesh it. In fact if you see due to land boundary agreement india lost around 40 square kilometer of area okay sorry square kilometer of area to bangladesh net amor etik loss hala but still we will say ki this is a good deal because it's not just about the area itself it is about the welfare of the people for example aguru jo mane bangladesh re jo enclaves indian enclave thila तांका पाखरे इंडियन स्कीम रो बेनिफिट पहुंच पार नथला बिकॉज़ मझरे बांग्लादेश रो एरिया अछि सिमिलरली बांग्लादेश गवर्नमेंट किसी स्टेप नला तांको लोकों को पाखु बेनिफिट पहुंच पारलन so due to this rationalization of boundary now we are able to develop that area okay this is the reason so these are the many ways through which हमर geography related जहा जहा boundary issue अछि ताको हमें solve करि परिया okay now come to defense related issues defense related boundary issue कौन इंडिया रो first and foremost you know that territorial aggression or expansionism अछि माने हम साइड रे जेमति चाइना तारो मसल फ्लेक्स करूसी मझरा मझरे से इनकर्शन कर दबो इंडिया भितर पळे आसियो केतले साउथ चाइना सी रे जाई कि से कोन करियो जाई कि फिलीपींस ताइवान एमानु कहयो कि ए सब जगह मोर सो दिस इज द मीनिंग ऑफ टेरिटोरियल एग्रेशन जेतले में अन्य रो टेरिटरी को हमें एनक्रोच करि जाओ also known as expansionism माने जेतले कंट्री ता तारो टेरिटरी को एक्सपैंड करूसी सो यारो सॉल्यूशन कोन यारो सॉल्यूशन हो कि हमें हाई लेवल पॉलिटिकल टॉक्स करिवा डिप्लोमेटिक चैनल थ्रू रे डिप्लोमेसी चलेगा ता सहित सहित कमांडर लेवल टॉक्स हो कमांडर लेवल टॉक्स माने जो माने स्पेसिफिकली से एरिया रे जो पोस्ट है डिफेंस पर्सनल तांको भितर भी टॉक्स हो बिकॉज़ बेले बेले कोन होय कि ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन आल्सो देयर वुड बी कॉन्फ्लिक्ट so if there is regular communication between these two commanders then their forces would be under control that is the reason so here you can see ki multiple level le we should try to have diplomacy we should try to have talks for example at the ground level there is a talk between the commanders means ये armed forces लोगों को भितरे talk चलियो ताठ ऊपर केस रे diplomats मान को भितरे चलियो for example इंडिया रो जो माने सपोज आईएफएस ऑफिसर से माने तांको काउंटर पार्ट मान को संगरे टॉक्स करिए एट द हाईएस्ट लेवल पॉलिटिकल लीडर्स मान को संगरे टॉक चलिए फॉर एग्जांपल शी जिनपिंग आसी की मोदी जी को संगरे कथा सो दिस इज द हायरार्की
And here, if there is political will here, it will also percolate down to the lower levels. And it भी जिनिष solve ହେଇପାରିବ. On the other hand, ଯଦି issue ଟା ଏଠୁ start ହେଇଛି, it can also escalate up to this. So we should always have a entire जो schema टा, ये जो entire framework टा, this should always have talks with each other. Okay, each other counterpart संगे सबବେଳେ talk हवाटा बहुत जरूरी. So that is the solution towards this. Please don't write in the solution. Please don't write war. Okay, war को हमें solution भाବରେ एठी नबानी. एठी तमे कहबेनी कि हमें चाइना जो टेरिटोरियल एग्रेशन होची तार हम सॉल्यूशन करिया कि चाइना को अटैक करी चाइना को हरेदा. So please don't write such kind of way forward. And the second part is ये सब जिनिस करिया पॉइंट कोन, it is to settle the disputed boundaries. Finally जदि disputed boundary को हमें settle कर देले माने international boundary बनी देले ताहले हमर एते बेसी इशू हबो नाही. For example, right now इंडिया पाकिस्तान जो सेटल्ड बाउंड्री रे, पाकिस्तान इंडिया रो सेटल्ड बाउंड्री एते इशू नै. यूजुअली इशू कोठी हुए एलओसी रे, इशू हुए एलएसी रे. इवन इंडिया चाइना रो भी मझरे किछि मिडिल सेक्टर बोली गोटा एरिया अछि, सेटा सेटल्ड बाउंड्री, सेठी किछि इशू हुए नै. बट जोठी अनसेटल्ड अछि सेठी इशू हो, राइट. एनी डाउट सो फार? एतरे किछि डाउट अछि? Geography related issues, defense related issues कौन कौन इंडिया रो अछि, बॉर्डर रिलेटेड. हेलो सर. हाँ सर, सेटा जो किछि एरिया अछि अनसेटल्ड ହେଇକି ଅଛି, ସେଟା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ନାହିଁ ଯେ ସେଟା ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି କିଛି ସେଟଲ୍ କରିହବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେଟା ଇସ୍ୟୁଟା ସବୁବେଳେ ହଉଛି, ମାନେ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁବେଳେ ହାଜାର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବା ସେଠି ସୈନ୍ୟମାନେ ସେଠି ଶହୀଦ ହଉଛନ୍ତି. Okay, you are saying for example LOC LSC रे एमती चलछि इशू, Yes तो sir. यार काहे कि परमानेंट सॉल्यूशन कहीं हो नहीं. हाँ हाँ Now when you understand कि यार प्रॉब्लम कहीं केला, then you will understand कि यार सॉल्यूशन कहीं ही पर नहीं. Now to tell you कि LOC प्रॉब्लम कहीं की हला, because पाकिस्तान डिमांड्स की कश्मीर हमको पूराटा दे दिए, पूरा एंटायर कश्मीर हमको दिए. इंडिया कौन चाहूची, इंडिया चाहूची जो कश्मीर जो पार्टा पाकिस्तान रही टिके पीओके सेटा भी आम अंडर आसी. तो आम पई सॉल्यूशन हला कि पीओके आम आडू आसी, तांको पई सॉल्यूशन हला कि पूरा कश्मीर आम पई आसी. सो जेपर्यंत आमर वांट टा दुई जनकर सेम न होची सेपर्यंत जिनसटा सॉल्व होई परिबन. एटा सेतବେଳେ सॉल्व हो जेतବେଳେ बोथ साइड कहबे कि हम कंप्रोमाइज टिके कंप्रोमाइज करियो. सपोज एबे जोटा एलओसी अछि, बोथ साइड डिसाइड कि एटा को ही हम इंटरनेशनल बाउंड्री कर दवा. ता माने कोन, ता माने आमे हमर जो डिमांड अछि सेतो किछ कमे देलु. आमे जोटा आगर कहउथुलु हमको पीओके भी दरकार, एबे इंडिया कहबे ठीक अछि पीओके मत दरकार नहीं. पाकिस्तान कहबे मत कश्मीर बाकी इंडिया वाला कश्मीर साइड ता दरकार नहीं. आर यू विलिंग टू गिव अप योर डिमांड? कथा तुम तो डिमांड छाड़ियोनी केबे. तुम कह आमे सब दे दवा कश्मीर दबानी पाकिस्तान. दैट इज द इशू. बुझी बुझी सेमती एलएसी रो इशू कोन, चाइना चाहूची कि माने पूरा एंटायर लद्दाख एबे जो इंडिया पार्ट रे से पूराटा आसी ता पाखु, जोटा कि अक्साई चेन टा ऑलरेडी अछि चाइना पाखरे. अक्साई चेन टा को लागि लद्दाख, से कहूची कि अक्साई चेन नो ही पार्ट लद्दाख, तुम एंटायर लद्दाख हमको दे दियो. आमे चाहूछु पूरा अक्साई चेन लद्दाख रो पार्ट है कि आम साइड को आसी. तो जेपर्यंत हमरो डिमांड दुई जनकर सेम हिनी सेपर्यंत इशूटा केमती सॉल्व हो. दैट इज द रीजन. तार किछि हिस्टोरिकल बा किछि आगुरु प्रूफ अछि कि बा किछि डॉक्यूमेंट अछि कि जे एक्चुअली पार्टटा काହାର? बहुत ତା ଉପରେ डॉक्यूमेंट କିଛି अछि. कथा हला देख जेतेବେଳେ तुमे चाहूछ कि तुमर नेबर रो घर रो एरिया टा को नबो बोली, ओके, सीए जहा डॉक्यूमेंट तुमको देखियो तुमे हाटा को एक्सेप्ट करियो नहीं. बर्तन तुमर यदि भी ट्रू डॉक्यूमेंट थिबो, तुम नेबर यदि चाहूछ तुम एरिया को नबाको, तुमे ताको तुमर प्रूफ देखियो, सीए सेटा को एक्सेप्ट करियो. से कहबो तुम एटा फॉर्जरी करके आनजो. जोटा घर घर भितरे होची सेम जिंस कंट्री कंट्री भितरे भी होची. ओके, हमें यदि ऑब्जेक्टिवली एसेस करिया कहा पाखरे को एरिया अछि, फॉर एग्जांपल यू विल आल्सो सी कि माने पाकिस्तान भी बहुत एरिया इंडिया ऑक्युपाई करके रखी जे पन एक्सपेंशनिज्म करके. इंडिया रो भी किछ एरिया अछि जोटा पाकिस्तान ऑक्युपाई करके रही. मतलब इंडिया ए एरिया को पाकिस्तान को छाडुनी, पाकिस्तान ए एरिया इंडिया को छाडुनी. किए केबे चाहिबो कि तार जो एरिया अछि एटा को छाड दबो. सो एटा गोटे स्टेटस को एमतिया गोटे बैलेंस है कि चली कि केही कहार जिद रे को छाडिया को चाहना. ये यांको जिद रे अटल, सी तांको जिद रे अटल. दैट इज अ वेरी सिंपल रीजन. केही कंप्रोमाइज करिया को चाहना. ओके, ହଁ ସାର୍, ଏଟା ଯଦି କେହି ଜଣେ ଚାହିଁବ, ଧର ସିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ସେଠି ସିଭିଲ ଇଏରେ କେସ୍ କରିକି इंटरनेशनल ତାର कोर्ट କିଛି କିଛି ତାର ପ୍ରୁଫ୍ इंटरनेशनल कोर्ट ଦେଖେଇକି मन कर ସେଠି मन ସल्ଭ रख କରିପାରିବ. इंटरनेशनल किछि सॉल्व कर पारी. इंटरनेशनल कोर्ट सब गुडा यूजलेस. सब इंटरनेशनल कोर्ट जहां भी आसे आईसीजे हो और जोटा को हेग जोटा अछि
को भी कोर्ट देखियो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तो यूजुअली इंडिविजुअल क्रिमिनल मान आईसीजे टा होची जोथरे स्टेट मान को पार्टी करा जी परी माने कंट्री मान को करा जी परी तो यार ऑल ऑफ दीज आर यूजलेस कथा होची यार जहां भी वर्डिक्ट आसियो सेटा को इंप्लीमेंट किए करियो ताको इंप्लीमेंट करिया पे किछि फोर्स दरकार ना सपोज तुम्हारा कोर्ट रे गोटे डिसीजन दिया गला कि तुमने तुम्हारा एनक्रोच करछो नेबर रो तुमको कुहाबो एविक्ट करो तुम यदि एविक्ट करिवनी ताले कोर्ट कोन करियो पुलिस पठेयो तुम घर ना पुलिस विल एविक्ट यू सो यू नो दिस बिकॉज ऑफ दिस यू विल इंप्लीमेंट द कोर्ट ऑर्डर ना कंट्रीज नो दैट इंटरनेशनल कोर्ट रो जहां वर्डिक्ट आसियो ताको इंप्लीमेंट करिया को कोनोसी पुलिस बा कोनोसी फोर्स नाही तेणु से जानी इम्प्लीमेंट हेनी जदि इम्प्लीमेंट हेनी जानी कहीं एक्सेप्ट करेंगे फॉर एग्जांपल यू सी ऑलरेडी चाइना को फिलीपींस नहीं जाइए कोर्ट को आईसीजे को नहीं जाइए साउथ चाइना सी केस रे आईसीजे वर्डिक्ट भी देदेला आईसीजे कहला कि ये क्लेम टा होचे फिलीपींस करेक्ट थिला चाइना एनक्रोच करके रही चाइना को कहले कि तुम एठू बाहर चाइना कहला मु तो भाई एठू जीविनी तुम कौन करछो कर ना आईसीजे पाखरे कौन मीडियम अछि याको इंप्लीमेंट करे यार किछि भी नहीं तांक पाखरे डू दे हैव एनी फाइटर जेट्स डू दे हैव एनी शिप्स किछि नहीं इट्स जस्ट एन इंस्टीट्यूशंस this is the issue implement kiye kariyo tanka order okay these are some practical problems that countries are facing सर जो भले रिसेंटली गोटे हैला रूसिया रो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करिया पे ऑर्डर दिया हैतला हम्म इंटरनेशनल कोर्ट रू तांको ऑर्डर पे आस्थिला जे तांको तो अरेस्ट सेटा करा तो जे implement ही पारुन ना तांको हेई कोठी पारलानी सेटा अरेस्ट करा से तो कोई कथा हाँ नहीं implement करा तार जाई किछि परिबनी तार किछि तार वैल्यू ही रहू ना इंटरनेशनल कोर्ट रे हाँ ऑफ कोर्स किछि वैल्यू नहीं से केई ता कथा सुनंदी ओके ठीक है लेट्स मूव ऑन ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट तापर कोन इशू हबो लैक ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हमरो बोथ कंट्री इंडिया रे इंडिया साइड रे बेसी डेवलप नहीं फॉर एग्जांपल रोड्स रेलवेज चेक पोस्ट फेंसेस एसब जिनस किसी डेवलप नहीं which will support our border guarding forces आमर बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस काम करिया पई तो तांको तो किछि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार ना सपोज तांको हमें कहया कि तुम ए स्ट्रेच टाको पेट्रोलिंग करो से माने कहे सपोज ए जगह हम पेट्रोलिंग केमती करियो हमें सपोज कार नै कि जीवो एट तो रोड ही नहीं एट तो माउंटेन अछि सो यू हैव टू बिल्ड अ रोड सपोज यू आर सेइंग कि हमें एथरे किछि टैंक्स पठै टैंक जिया पे तुम किछि रोड तैयारी करछ कि किछि एथरे एयर स्ट्रिप बनैछ कि जोथरे कि ऑफलोड करा जाई परियो सो दीज आर द इशू कि आमो साइड रे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर टा बहुत ही खराब अछि और एटलीस्ट टिल 2014 it was very very bad माने some good things have happened after the new government came into power so later on this indian government started to build a lot of border infrastructure एथरे माने बहुत भलो काम करछन तो चाइना ऑलरेडी कौन करथिला चाइना ता पार्ट रे बहुत ही भलो भलो डेवलप कर दे सकथिला ए सब एरिया को लिंक कर सारथिला रोड नॉट ओनली विथ रोड बट आल्सो विथ रेल नेटवर्क also with optical fiber cable through रे भी कनेक्शन करा हैतिला कि सिक्योर कम्युनिकेशन होबो बोली बर्तन इंडिया एबे रिसेंटली सब जिंस को डेवलप करछि इंडिया साइड रे हम साइड रे हम डेवलप करछि it will take time but we are trying to catch up in terms of border infrastructure so for example I have given the solution कि यार solution कोन of course border infrastructure development करिया for example through bro कोन border roads organization okay यार काम ही होची बॉर्डर एरिया से रोड तैयारी करे नॉट ओनली रोड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो इट बिल्ड्स सेमिति स्मार्ट फेंसिंग करे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट फेंसिंग इफ दिस इज अ नॉर्मल फेंस चलो एठी तुमे किछ गोटे तार बाड़ लगे गोटे फेंसिंग कर दल दिस इज वन टाइप ऑफ फेंसिंग ओके स्मार्ट फेंसिंग होची जोतरे एमितिया किछ फिजिकल बॉर्डर नथियो बट यूजिंग टेक्नोलॉजी यू हैव अ सॉर्ट ऑफ अ वर्चुअल बॉर्डर तो वर्चुअल बॉर्डर माने कोन सपोज इंस्टेड ऑफ दिस बॉर्डर यू हैव पोस्ट जो तुम सीसीटीवी कैमरा लगे दी सपोज यू हैव लेजर ग्रिड आम रख कि जहाँ थ्रो रे के यदि ट्रेसपास करियो कि पसेउ ट्राई करियो एटा हम अलार्म पठेयो सो विल नो कि के जने ट्रेसपास कर सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ वर्चुअल बॉर्डर एंड दिस इज नोन एज स्मार्ट फेंसिंग नाउ व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस स्मार्ट फेंसिंग पॉइंट होची कि सब जगह रे हमें फिजिकल बॉर्डर तैयारी कर परिबु ना फॉर एग्जांपल सपोज हम डिस्कस करथलु डॉकी रिवर कथा which is the boundary between India and Bangladesh ना हमें रिवर रे किछि हमें तो बनी परियो कि किछि तुमे फिजिकल बॉर्डर बाउंड्री किछि हम बनी परियो एठी फिजिकल फेंसिंग किछि करि होबो तो सपोज तुमे नदी कूल रे भी कल मे बी नेक्स्ट ईयर कोन होबो एठी बन्या आसी से तुम फेंस का उड़ेनो तो व्हाट रादर वी कैन से कि एठी हमें सीसीटीवी सेंसर एसो जिंस लगे कि हमें तांको ट्रैक करि परियो
So this is the meaning of smart fencing. Okay. So under this, we have developed one system called Comprehensive Integrated Border Management System, also known as CIBMS. Okay. Now CIBMS होची smart fencing or digital fencing or virtual fencing रो गोटे system जहाँ further under रे गोटे bold QIT project अछि. बर्तन यारो full form पचारनी बहुत लंबा full form अछि. Border something operated something dominated QRT interception team गोटे लंबा नाम अछि. तार बहुत सिंपल पॉइंट होची कि यूजिंग दिस सेम काइंड ऑफ स्मार्ट फेंसिंग नाउ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो रिवर बॉर्डर टा अछि एथिरे हमें सीसीटीवी सेंसर लगे दिछु. So this project is known as bold QIT and this comes under broadly the overall framework of CIBMS, comprehensive integrated border management system. Okay. सेमिति आउ कोन बॉर्डर सॉरी डिफेंस रिलेटेड इशू कोन ट्राई टू अंडरस्टैंड आमे एबे सब डिफेंस रिलेटेड इश्यूज देखुचे. So second issue है कि आम पाखे मल्टीपल फोर्सेस अच्छी विथ ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शंस अंडर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज माने गोटे सेम एरिया रे डिफरेंट फोर्सेस अंडर डिफरेंट मिनिस्ट्री काम कर. तो ता माने कौन हो ता माने कोऑर्डिनेशन अभाव. फॉर एग्जांपल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना पाखरे यू हैव बोथ आईटीबीपी एज वेल एज एसएफएफ. एसएफएफ माने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जहाँ को भी आम कहूँ कि विकास बैटालियन भी कहा. So if you see ITBP comes under Ministry of Home Affairs, not even Ministry of Defense, Ministry of Home Affairs, and Special Frontier Force comes under Cabinet Secretariat. ना दुई जन को तमे गोटे जगह तैनात करिसो बर्तन ITBP वाला जोटी गुली चलाउछन्ती SFF वाला जानना कोन हिस. सो इशू होबो ना सेते. whereas if you see चाइना रो कोन फोर्स टा अछि चाइना रो एंटायर जो इंडिया संगे जो बॉर्डर पे लागिछि ना this entire border comes under one command, Western Command of People's Liberation Army PLA. So गोटे सिंगल कमांड अंडर रे वेस्टर्न कमांड ऑफ पीएल अंडर रे ई एंटायर फोर्स तांकर एठी तैनात अछि. सो दैट मींस एंड हमर कोन मल्टीपल जगह रे अलग अलग फोर्स लगे. सो इज दिस गुड फॉर इंडिया? ऑफ कोर्स नॉट. वी शुड आल्सो हैव वन सिंगल कमांड जहां अंडर रे एंटायर फोर्स माने रैशनलाइज है कि एंटायर फोर्स हम पाकर रही. सो यार बहुत सारा सॉल्यूशन अछि हम पाखे. फॉर एग्जांपल ओवरऑल वी कैन कॉल दिस एन आर्म्ड फोर्सेस रिफॉर्म्स. आर्म्ड फोर्सेस रिफॉर्म्स अंडर रे कोन सॉल्यूशन हम करि परिया. फर्स्ट ऑफ ऑल आम कहूँ कि जो सीडीएस पोस्ट क्रिएट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, राइट. दिस पोस्ट इटसेल्फ इज पार्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस रिफॉर्म्स बिकॉज अर्लियर इफ यू अंडरस्टैंड आगु कौन आम हायरार्की थिला आगु आर्म्ड फोर्सेस इंडिया रो तीनटा एयरफोर्स नेवी एंड आर्मी, राइट. सो दिस इज माने लैंड बेस्ड, दिस इज सी और ओशन रे, एटा होची एयर रे. Now each and every force रो तांकर माने टॉप किए थिले टॉप बॉस की एयर फोर्स रो जने चीफ ऑफ एयर फोर्स यार होचन चीफ ऑफ नेवी याकर होचन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. ओके. सो एमाने समस्त होचन यूजुअली जने जने 3 स्टार जनरल. नाउ एमानकर बॉस की एमानकर डायरेक्टली डिफेंस रो बॉस के ना एमान को ऊपर डायरेक्टली जाके डिफेंस मिनिस्टर हु इज अ सिविलियन. Defense Minister Rajnath Singh is not a defense personnel. So all of them are reporting different things to Defense Minister जहाँ पाखरे defense related technical expertise नहीं, right. So यार इशू कौन हो कि आ प्लस सेकंड कथा कि तीन जन जाको सेम रैंक रो तेणु हेई पारे तांका भितर इगो क्लास हो ना. चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस से कहे कि आमे चलो ई कामटा इमतिया करिया. चीफ ऑफ नेवी जे से कहे कि नहीं ई कामटा डिफरेंट वे रे करिया. आर्मी आउ जो आउ कुछ कथा कहियो तो फाइनल डिफेंस मिनिस्टर को भी जाना नहीं कि किए ठीक कहूँ किए भूल कहूँ. तो आमे भाविलु कि यांको ऊपर यूजुअली आमे जने डिफेंस मिनिस्टर बदलले आमे जने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रखिया who will be a 4-star general, means he will be above in rank to all of these and एमाने समस्त CDS को directly report करिवे, right. So that means air force, navy as well as army, all of them are reporting to CDS. CDS is reporting to defense minister of defense and the minister of defense in return is reporting to the prime minister finally. He is the chief. But point is this person is a technical expertise तांकर थिबो. He is or she is the head of entire defense force, right. So या द्वारा हमर कोन हो कोऑर्डिनेशन बेटर हो. Okay. That is the point.
सो आमर ये मल्टीपल फोर्सेस कथा कहूँ तार गोटे सोल्यूशन हो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सिमिलरली गोटे जेनेरिक पॉइंट कि इंटर एजेंसी कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन रखिया कथा कि सबू एजेंसी माने सेफ्टी सॉरी सिक्योरिटी एजेंसी माने तांको भीतर कोऑर्डिनेशन रखी। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली आमर गोटे यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर होबार अछि एंड दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। Going to explain this in a bit, try to understand. This is a very important concept. Okay, integrated theater command. Try to understand कि यार माने कौन। देखो एपर्यंत आमर ट्रेडिशनली आर्म्ड फोर्सेस माने केमितिया काम करंती। सपोज इंडिया रो सपोज एटा होची इंडिया और पाकिस्तान भितर बॉर्डर, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज इंडिया। एठी जो आर्म्ड फोर्सेस अछंती मेजरली एठी आर्मी रो लोक माने अछंती ना, तांको एठी डीप कवर दउचंती को माने एयर फोर्स रो किछि बेस अछि। एपटे कौन अच्छे एपटे गुजरात तले जो ओशन टा अच्छी एथे नेवी भी तैनात अच्छी, नेवी भी तांको सपोर्ट देवा रेडी अछि। बर्तमान सपोज इंडिया पाकिस्तान भितर किछि गोटे वार गोटे स्टार्ट हेला और किछि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हला, तो कौन हबो इंडिया रो हमर आमे कौन करिया ट्राई करिवु मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रु तांकर जो वार रूम तयारी हेतिबो सेतु इंस्ट्रक्शन जीवो अला अला आर्मी को सेठिकार जो आर्मी बैटालियन जो अछंती तांको गोटे इंस्ट्रक्शन जीवो, एयर फोर्स को इंस्ट्रक्शन जीवो, नेवी को गोटे इंस्ट्रक्शन जीवो एंड फाइनली वी एक्सपेक्ट कि एमाने समस्त कोऑर्डिनेटेड मैनर रे फाइटिंग करिए। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। बट इमेजिन जेहेतु एमाने समस्ते दे आर अंडर डिफरेंट कमांड्स। सो आर्मी इज अंडर वन कमांड जे कि जने आर्मी ऑफिसर, एयर फोर्स जनका कमांडर आउ जनका कमांडर अछि से लोकल जगह रो कथा हम कहू, से हो जने एयर फोर्स ऑफिसर हेति, नेवी जन आउ जनका कमांडर अछि से गोटे नेवल ऑफिसर हेति। नाउ ईच कमांडर्स हे पारे सपोज दिस इज कमांडर 1, दिस इज कमांडर 2, दिस इज कमांडर 3। नाउ हे पारे कि एमाने तांको भितर भलो रैपो नै और कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं, तो ता द्वारा कोन हबो वी विल लूज द वार, राइट। सो नाउ वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर्स। इंटीग्रेटेड थिएटर्स माने कोन, एबे आमे कहया कि आमे ईच एंड एवरी यूनिट को अलग कमांडर भितर न रखी कि गोटे गोटे थिएटर माने गोटे गोटे एरियाज रे गोटे कंबाइंड फोर्स रखिवा जहां अंडर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट थियो फ्रॉम ईच ऑफ दीज फोर्सेस। फॉर एग्जांपल गोटे सिंगल कमांडर अंडर रे ही और शी विल कमांड a certain number of units of navy, certain number of units of army, certain number of units of armed force, sorry air force, right। तो किछि फाइटर जेट यहाँ अंडर डायरेक्टली अछि, किछि नेवी रो शिप यहाँ अंडर अछि, किछि आर्मी रो ऑफिसर्स टैंक वैंक यहाँ अंडर अछि। so this person is able to coordinate and immediately respond, okay। this is the meaning of integrated theater command। and if you see most of the developed countries are gradually moving towards integrated theater commands, whereas india रो पर्यंत हमें कंप्लीटली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को अडॉप्ट करना हो। हमर गोटे ही इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड अछि, हमर जो न्यूक्लियर कमांड ता गोटे अछि। इंडिया रो न्यूक्लियर कमांड इज द ओनली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। सो न्यूक्लियर माने आर्म्स एंड एम्युनिशंस को हमें यूज करिया पे गोटे गोटे सिंगल कमांडर अंडर रखिछु किछि अमाउंट ऑफ आर्म्ड फोर्स सॉरी एयर फोर्स, नेवी एज वेल एज आर्मी यार यूनिट को रखिछु। अदरवाइज बाकी सब वे रे कोन अछि एमती ट्रेडिशनल वे रे सो स्कैटर्ड वे रे अछि। So is this not a way to counter this issue of multiple forces? आमे यदि फॉर एग्जांपल जेमती देखो चाइना भी सेमती इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड करछि। मु तो कहली कि इंडिया चाइना बॉर्डर रे से माने गोटे एंटायरली वेस्टर्न कमांड ऑफ पीएलए से माने रखछन, राइट। दैट मींस गोटे सिंगल कमांडर अंडर रे पूरा एंटायर फोर्स अछि। सो दिस इनक्लूड्स चाइना रो नेवी रो भी किछि अल्प किछि एसेट अछि, बट मैक्सिमम एयर फोर्स रो एसेट अछि और आर्मी रो एसेट अछि। सो दैट मींस दे आर मोर कोऑर्डिनेटेड। तो आमको भी सेमती कोऑर्डिनेट करिया को पड़ी, राइट। एंड फाइनली गोटे शेकतकर कमिटी बोली गोटे कमिटी बसतिला। दिस कमिटी was set up for the to give recommendations on detailed or holistic reforms of Indian armed forces, and सी गोटे recommendation देथिला to make Indian forces lean and mean। शेकतकर कौन कहले, शेकतकर said शेकतकर कमिटी बाय द बहुत सारा रिकमेंडेशन थिला, ओके। तो वन ऑफ द रिकमेंडेशंस मेजर रिकमेंडेशन ऑफ शेकतकर कमिटी वाज दैट इंडियन आर्मी जो अछि हमर केवल नंबर रे इट इज वेरी ह्यूज,
बट देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ रिडंडेंसी से कहले कि एते बड़ फोर्स रखियार पॉइंट किछि नै रादर फोर्स को नंबर को कमे दिया हो बट सेमान को आमे लीन एंड मीन करिया लीन एंड मीन माने कमे देबू बट जेतिकी लोक भी रहिबे जेतिकी सोल्जर रहिबे सेमानकर कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ेदा तांकर स्किल बढ़ेदा एबिलिटी बढ़ेदा एंड ता द्वारा कोन हबो ता द्वारा हमर आर्मी टा बेसी इफेक्टिव हो सो यू कैन थिंक ऑफ दिस इन द सेंस कि सपोज तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉय रखिछ बहुत सारा ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉय अछन बट समस्ते मैक्सिमम काम करूना मे बी तांकर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इज 40% और 50% सेति की दरकार भी नहीं एम्प्लॉय रखिया सो सेकत करी सेइंग कि तांकर तो किछि एम्प्लॉय को तुम छुट्टी दे दियो बाकी जेति की रखछ ट्राई टू इंश्योर कि एटलीस्ट 80 to 90% से काम करी राइट सो या द्वारा कोन हबा हमर फिजिकल बर्डन भी कमी जियो प्लस ता संगे आर्मी टा मोर इफेक्टिव हे ओके so this is also a recommendation you can write ki Shakatkar committee one of the recommendations was to make Indian armed forces specifically Indian army to lean and mean force Indian armed forces भितर भी inter forces भी बहुत सारे issue अछि within army navy and armed forces भी बहुत issue अछि कहा जाए कि हमर लायन शेयर जाए आर्मी almost 80 to 90% of our budget defense budget पळे यूजुअली जाउछ आर्मी नेवी और आर्म्ड सॉरी एयर फोर्स के पचरुना so Sakatkar government also highlighted that he said कि आर्मी रो एक्सपेंडिचर कमी की सेतरु आमे किछि इन्वेस्ट करिया नेवी और एयर फोर्स एयर फोर्स रो तो पैथेटिक कंडीशन हमर जति की मिनिमम स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ रहया कथा ताठू आई थिंक अराउंड 36 or something अछि we need around 42 to 45 but chalo we don't need to go into detail okay so these are the issues now there is also a lot of issue with intelligence agencies इंटेलिजेंस एजेंसी माने कोन इंडिया रो के इंटेलिजेंस एजेंसी अछंती कैन यू टेल मी रॉ एंड आईबी वेरी गुड so internal intelligence agency is IB external is RAW apart from that let me tell you there are other intelligence agencies also for example NTRO अछि तो आउ एंती दुई तीनटा अल्प किछि अछंती but these are the major agencies okay internal पे IB आउ external पे RAW तेरे एनआईए भी रहबो केते नेशनल इंटेलिजेंस आसीबनी NIA is mainly invest ता नाम रही अछि ना नेशनल ओके इन्वेस्टिगेशन ओके एजेंसी intelligence is someone who is collecting intelligence primary job is to collect intelligence NTRO जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तार काम होची इंटेलिजेंस गैदर करिया so what are the issues with Indian intelligence agencies हमर ए जो दुटा अछंती मेन जो माने यांको तांको भितरे भलो कोऑर्डिनेशन नाही स्पेसिफिकली विल सी कि रॉ वालांकर फुटानी टी अधिक बिकॉज़ obviously they are dealing with bigger things IB को कहीं पचार ना IB वालांकर inferiority complex अछि so their issue is they are working in silos this is also something we had discussed earlier जहाँ को हम कहू डिपार्टमेंटलिज्म कि गोटे डिपार्टमेंट आ गोटे डिपार्टमेंट संगे कथा हो नाही similarly there is a lack of ground information also yeah Mitra, again we are not going to go into detail but if you see there are different kinds of intelligence also there is one called signal intelligence this is known as SIGINT there is one called human intelligence which is known as HUMINT so kata hoche kuha jaye ki Indian intelligence agency mane they are better capable to collect signal intelligence but very low capable of human intelligence because human intelligence or HUMINT jaha kuha hochi HUMINT collect kariya pe हमको enough number of spy दरकार जो माने बाहर कंट्री जाई की रहिबे एंड हमर स्पाई नेटवर्क टा बहुत ही पोर हमर मेन कॉम्पिटेंसी कोन हमर टेक्निकल पर्सन अछंती टीसीएस इन्फोसिस टाइप रो पिला हमर बहुत अछंती तो बसी खाली फोन इंटरसेप्शन ओके चैट इंटरसेप्शन ए सब जिंस रे नाही बट एक्चुअली इफ यू सी हम स्पाई नेटवर्क टा एत डेवलप नहीं इंडिया so this is also an issue तो हमको यार सॉल्यूशन कोन you develop your spy network right सेटा को होची ग्राउंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना so यार सॉल्यूशन कोन हम कहि परियु इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन अमंग एजेंसीज तो जेनेरिक सॉल्यूशन कि इंटीग्रेशन बढ़ाई दियो रॉ आईबी केमिति बढ़ाबो हम किछ कोन हम कहू कि इंटीग्रेशन बस कोऑपरेशन बढ़ाई दियो सेमिति हम कहू कि डेटाबेस शेयरिंग करो फॉर एग्जांपल हम कथा हिलु नेट ग्रिड नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है ना एटा तमर माने कहा पर आसला एटा व्हिच इंसिडेंट लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेट ग्रिड डज एनीवन नो 2611 by वेरी 11. गुड 26 एक्सीलेंट 2611 मुंबई अटैक पर हमें रियलाइज कलु कि हमरो इंटेलिजेंस एजेंसी माने माने ईच अदर संगे कोऑर्डिनेट कर नथले तुम कहि दिली कि हमें ताकर इंटरसेप्ट करथिल फोन कन्वर्सेशन जो माने अटैक करे को आसिले
बट आमे निजर एजेंसी मान भितर ही फॉल्ट थिला डिपार्टमेंटलिज्म एते थिला कि आमे से जिनसर इंपोर्टेंस जानि परलु नै एंड ता द्वारा से दैट फेल इनटू द क्रैक ऑफ द सिस्टम एंड दैट लेड टू दिस ह्यूज अटैक सो आफ्टर दैट इंडियन गवर्नमेंट सेट अप दिस नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और नेट ग्रिड सेमती सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम सीएमएस एटा आमे कथा सी डॉट अंडर आछि नेत्र कथा हेतलु डीआरडीओ रो अछि नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस एगुड़ा हूँ गोटे गोटे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस each other संगे समान they should be able to माने we should be able to integrate them integrate कले कौन हम हमको गोटे कंप्लीट पिक्चर मिलियो हेई पारे नेट ग्रिड पाखरे अधा इनफॉरमेशन अछि सीएमएस पाखरे अधा इनफॉरमेशन अछि नेत्र पाखरे आ किछ इनफॉरमेशन अछि सो एटा को कोन अलग अलग डिपार्टमेंट हैंडल करछन्ती तो केही जिंसटा कोन एंटायरली बुझ पाना आमे if you are able to bring them together then we will be able to see the overall कोन bigger picture कोन what is the threat we are facing so database sharing similarly this is the last point is very important civilian participation in border management specifically for intelligence gathering ता माने होचे से बॉर्डर एरिया रे जो लोक माने सिविलियंस अछंती विलेजर्स फॉर एग्जांपल अछंती यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम आल्सो कथा होचे एबे नाही कि एबे सेमतिया हो नाही बोली एबे भी होउची सेमतिया बट कथा होचे वी आर नॉट डूइंग इट इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर बहुत भलो वे रे होनी राइट एंड बाय द वे यार भी बहुत सारा ऑफ कोर्स बहुत सारा इश्यूज अछि थ्रेट्स अछि फॉर एग्जांपल इफ यू आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल विलेजर्स सिविलियंस नाउ देयर इज अ थ्रेट टू देयर लाइव्स आल्सो हे पारे कि से कथाटा जाना पड़ले माने अन्य कंट्री रो दे विल आल्सो ट्राई टू अटैक द विलेजर्स सो देयर इज ड्रॉबैक टू दैट आल्सो बट माने कंसीडरिंग ऑल माने बेनिफिट्स एंड यू नो deficiencies we have to integrate people civilian participation हमको जहां भी करिया को पड़ियो इनफैक्ट इफ यू सी जो रिसेंट जहां भी माने चाइना जो इनकर्सन हेतला चाइनीज सोल्जर माने जो आसीथिले इंडिया भितर को ए यार इन्फॉर्मेशन फर्स्ट सेटिकर लोकल विलेजर्स माने देथिले आर्मी विलेजर्स मान को इन्फॉर्मेशन पाइला परे कि इंडियन आर्मी से जाई पहुंच so you see what is the importance of local villagers माने नोटिस करन कि तांको साइड रो केतबेले तांको साइड रो एक्सपेंशनिज्म होची केतबेले तांको साइड रो ट्रांसग्रेशन होची राइट so we should always take into account or we should always take into our fold the local civilian that's the point now come to this another third section by the way ये जो framework टा अछि ना this framework is your entire I will say 60 to 70% of this chapter is this framework only ये framework टा जो यदि बुझी जिवो कि problem कोन आ solution कोन then you will be able to write a good answer okay the rest of the chapter is some specific point wala chapter sorry topic achi chapter and in any case if you see this framework is very very comprehensive बहुत सारा points अछि obviously exam रे इतने सारा point तो mind पे आसियो but again it is fine if you are able to remember a few points then also it's fine 5 to 6 points you are able to write then also it's good okay I don't expect कि anyone will be able to write this and even I took more time to write this ना इस जिन को develop करिया को मो पाखरे time थिला so you will not have that much time in the exam now say this cross border threats कोन कोन हमर अछि main हला हमर drug smuggling माने across border जो drug smuggling होची and narco terrorism narco word means something related to drugs so एटा बेसिक कोठी होची पंजाब बॉर्डर रे होची पाकिस्तान साइड रो आछी कोकेन मणिपुर एंड मिजोरम कहा पे होची ये कहा को बॉर्डर करछन मणिपुर एंड मिजोरम Myanmar. very good so at one side we have Pakistan at the other side Myanmar these two are the main channels for drug smuggling सर ड्रग्स ट्रायंगल गुटे कोन अछि कि अच्छी यहाँ पर अच्छी सब अच्छी नोट रे सब अच्छी डोंट वरी so what else are the problems then there is human trafficking and illegal immigrants की आछंती रोहिंग्या रेफ्यूजीज आछंती सुनिथियो बार बार म्यांमार रो आछंती तांकर ओडा राखिन प्रोविंस अछि सेटो रोहिंग्या माने आछंती so we'll briefly touch about rohingya refugees also later on तो ସେମାନେ जो इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग होची इंडिया भितर आछन ता द्वारा कोन होची लोकल एरिया रे हम इंडिया भितर भी टेंशन क्रिएट होची बिकॉज़ ह्यूज अमाउंट रो लोक माने आसी गोटे जगह रे पहुंची गेले कोन हो सेटिकार डेमोग्राफी जतर चेंज ही जिवो पॉलिटिक्स चेंज हो पॉलिटिक्स को इंपैक्ट करियो लोकल रिसोर्सेज को इंपैक्ट करियो सो दैट विल बिकम दैट इज हाउ एन एक्सटर्नल थ्रेट विल टर्न इनटू एन इंटरनल थ्रेट ओके सेमते बांग्लादेशी रिफ्यूजीज तुम जानिथो
ऑलरेडी ओडिशा रे भी बहुत जगह रे बांग्लादेशी रिफ्यूजी आसी सेटल्ड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट गुड़ा यूजुअली देखियो ऑलमोस्ट एंटायर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा सब डिस्ट्रिक्ट्स रे किछि किछि नंबर ऑफ बांग्लादेशी अछंती बालेश्वर अछंती भद्रक रे अछंती पुरी रे अछंती केंद्रापड़ा रे अछंती जगतसिंहपुर रे अछंती राइट सो हाउ आर दे कमिंग बट यू विल नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ बांग्लादेशी रिफ्यूजीज इन वेस्टर्न ओडिशा नुआपड़ा सोनपुर एसु रे नांती because they are coming illegally through the sea channel sea route and एठी आसी settle down करी होछन so this is also a threat similarly counterfeit currency also known as fake notes okay duplicate note जो currency आसी usually pakistan ru आसी pakistani with help of pakistani government also they are printing this duplicate notes and तारो purpose होची कि इंडिया रो इकोनॉमी को इम्पैक्ट पकेगा okay similarly illegal trade of arms and ammunitions arms trade माने बंदूक को इलीगली मेड बंदूक जहार लाइसेंस किछि नथियो जोटा को यूजुअली देसी बंदूक भी कहते देसी खट्टा कहते तार भी ट्रेड हो जहाँ को सपोज गोटे गैंगस्टर को किणवार अच्छे एक बंदूक तो सी तो जाकि दुकान किणवानी बिकज दुकान किणले ताको तार आइडेंटिटी दबाक पड़ो एंड मे बी से क्रिमिनल एक्टिविटी रे यूज कले ही विल बी कॉट सो व्हाट ही विल डू कि ही विल प्रिफर इलीगली इंपोर्टेड आर्म्स जहार किसी सीरियल नंबर नथियो जहार किसी ट्रैकिंग यूथ रे ही परिबो नाही सो दिस इज ऑल्सो एन इशू एंड यूजुअली एटा कोठु आसे क्रॉस बॉर्डर आसे माने पाकिस्तान नु बांग्लादेश रु ए सब जगह म्यांमार रु आसे सिमिलरली कैटल ट्रैफिकिंग सुनिथियो बांग्लादेश रो यूजुअली से कोन करबे सॉरी बांग्लादेशी माने आसी कि इंडिया रु बहुत सारा गाय भाई धरि की राति रे देखियो ट्रक ट्रक रे लोड करके नहीं जाते व्हाट इज द रीजन कैन एनीवन टेल मी काहे कि इंडिया रु से माने कैटल नियंती beef. वेरी गुड बिकॉज़ बीफ करके सेठी बिक्री कर पारे हाई रेट इंडिया रो जो यूजुअली जो बाहर जो बुलु थांती ना गाय माने कोन कहंता जो जहार माने जो मन को रखा स्ट्रे कैटल राइट यस स्ट्रे कैटल मान को से नहीं चालान करके बीफ करके बिक्री कर दिया तो एथरे कोन किछि भी तांकर खर्च किछि नहीं बट दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट स्पेसिफिकली दिस हैपेंस अ लॉट विथ बांग्लादेश बॉर्डर सिमिलरली क्रॉस बॉर्डर चलो एतिकी रो यार एतिकी उडार सॉल्यूशन कोन हम देखिए सो दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर ऑल ऑफ दीज तो यार सॉल्यूशन कोन हबो नाउ वी हैव टू क्रिएट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कले कोन हो ड्रग स्मगलिंग हो ह्यूमन स्मगलिंग हो ट्रैफिकिंग डिफरेंट गन्स हो फेक नोट हो ताकू आमे विल बी एबल टू चेक इट फॉर एग्जांपल चेक पोस्ट जदी बहुत जगह रे थिबो विल बी एबल टू चेक कि कोन जिंस सब चालान हो राइट सेमिदिया सर्वेलेंस आमे डेवलप करिए टेक्नोलॉजी यूज करी कोन करिवो आमे स्मार्ट फेंसिंग आमे डिस्कस करथिलु सीआईबीएमएस कथा कंप्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो थे सीसीटीवी लगे सेंसर लगे ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को हमें यूज करि so using this instead of only having physical barrier or physical boundary you are having a virtual boundary through which you are able to surveil and you are able to track right so this is one solution another solution is what generic solution सब लिखो interagency coordination right? different security forces india रे जो मना छन they should be talking to each other information share होवर अछि एंड फाइनली पार्टिसिपेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट कि लोकल लोगों को इंटेलिजेंस के तरीके ने रखिबु एवं बॉर्डर मैनेजमेंट रे भी तांको इंटीग्रेट करिवु फॉर एग्जांपल तांको भी किछि किछि हम छोटो छोटो रिस्पांसिबिलिटी दबु कि तुम नजर रखि दियो कि बॉर्डर सेपार रु कि आसुची एपट राइट सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग ड्रग स्मगलिंग सपोज होछ एबे लोकल लोगों को हमें यदि पार्टिसिपेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट रे नबु त लोकल लोक संगे संगे पुलिस को इन्फॉर्म कर देबे और आर्मी को इन्फॉर्म कर देबे कि आम घर साइड जो मिश्र बाबू अच्छा सी डेली राति कोकेन आणुं बाहर देन नेक्स्ट डे कौन हम संगे संगे मिश्र बाबू घर रेड पड़ो सो दिस इज द पॉइंट ऑफ पार्टिसिपेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट ओके नाउ कम टू दीज पार्ट्स क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड मिलिटेंट ग्रुप्स क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज द नेम सजेस्ट इट मीन्स कि बॉर्डर आर साइड रु आसुवा टेररिस्ट माने हु आर अटैकिंग इंडिया फॉर एग्जांपल हियर यू कैन राइट अबाउट उरी अटैक पठानकोट रे हितला पुलवामा रे अटैक हितला राइट so these were usually the terrorists coming from Pakistan तो यार सॉल्यूशन कौन ही परियो सी you will never suggest war हमें केबे सजेस्ट करिवो नाही बिकॉज़ war सजेस्ट करले कोन हो इट इज शोइंग कि ओके यू आर वेरी चाइल्डिश लाइक नो सजेस्ट करछो कि चलो war कर दो war तार ह्यूज इंपैक्ट हम ऊपर भी पड़ियो
but you can suggest about surgical strikes, right? Because यार एते huge impact पड़िबो नहीं, and हमरो जहाँ objective थियो that will be achieved. So here you can give example of Uri रे जो surgical strike ହେଇଥିଲା, right? Okay, I think somehow I missed something here. How could surgical strike ହେଇଥିଲା କି? ତାଙ୍କର ଯୋଉ म्यांमार गोटे करथिले सर्जिकल स्ट्राइक। राइट सेटा परे अछि एटा ऑपरेशन सनराइज। ठीक अछि, कम टू दिस पार्ट इनफिल्ट्रेशन ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स। तो किछि मिलिटेंट ग्रुप जो माने गोटे कंट्री रू इंडिया आडू आसुछंती। See what is the, by the way, can you tell me what's the difference between terrorism and militant groups we had discussed? What's the difference? सर टेररिज्म रो पॉलिटिकल एस्पिरेशन थाए, मिलिटेंट ग्रुप रो न थाए। Yes, usually terrorism ro objective thibo political goal. And what is this political goal? ତାଙ୍କର political goal होची जो legitimate government थिबो तांको एमाने forcefully they will uproot it or overthrow it through the use of violence or force. Okay, militant group, and usually these are the outsiders. Militant group कोन है कि usually they are insiders, means ସେମାନେ ଆମର ହିଁ ଲୋକ ହେଇଥିବେ mainly, and ତାଙ୍କର ବି may be କିଛି political goal ବି ଥାଇ ପାରେ, but that political goal is not the violent overthrow of government. ସେମାନଙ୍କର political goal କଣ ହେଇଥିବ, separatism ହେଇଥାଇ ପାରେ, right? ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଗୋଟେ separate state କି separate country ହବାକୁ। ସେମାନଙ୍କର goal ହେଇଥାଇ ପାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି special concession ନବାକୁ, କି ଆମକୁ କିଛି special recognition ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କର ହେଇଥାଇ ପାରେ କିଛି monetary benefit ପାଇଁ ବି କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, okay? Power କିଛି ହାସିଲ କରିବା ପାଇଁ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, but that is not to overthrow the government. So yankar aspiration ଟିକେ low, plus usually they are also, they could also be insiders. I had also told you this, you know, psychological thing that जदि बाहर किए आसला आम militant ताको आमे terrorist कहयो। इंडिया रे जो सेम जिंस हेले भी ताको आमे militants कहयो। देखियो बेले बेले अलग अलग हेडलाइन आसीयो, बेले बेले आसीयो कि कश्मीर रे किसी terrorist आसी के एठी अटैक कले। So from the headline you will be able to understand कि these are the Pakistan नु आछन। जदि हेडलाइन थिवो कि कश्मीर रे किसी मिलिटेंट्स माने मानको मार दिया वाला कि मिलिटेंट्स माने आसी किसी अटैक करछन, दैट मींस यूजुअली मे बी दे आर द कश्मीरी यूथ ओनली, जो माने मे बी आउटसाइड सपोर्ट पाई पाकिस्तान नो सपोज आईएसआई और आर्मी ताको सपोर्ट करके ये सब काम करछन। द पॉइंट इज आवर गोल कि हमर गोल कोन कि नो वन शुड बी एबल टू वन से कि देयर इज एनीथिंग सच एज इंडियन टेररिस्ट, देयर शुड नेवर बी सच ए केस। आमे कहू कि इंडियन टेररिस्ट बोलते किसी जिंस ही नहीं, अति बेसी खराब रु खराब कोन इंडियन मिलिटेंट्स, ओके? बट बाहर जी आसीबो पाकिस्तानी टेररिस्ट, चाइनीज टेररिस्ट, म्यांमारीज टेररिस्ट, ओके? दिस इज साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू नो, बिकॉज़ कई हमहु केबे परे न कहि पारंत कि अरे ये तो हला तुमरो इंडियन टेररिस्ट। आमे कहू कि इंडियन टेररिस्ट बोलते किसी जिंस ही नहीं, आमे तो भाई बहुत भल, ओके? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एठी कोन मिलिटेंट ग्रुप्स माने अराकान आर्मी। फॉर एग्जांपल अराकान आर्मी जोडा तार गोल एटा नुह कि किसी इंडियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करियो। अराकान आर्मी रो गोल होची कि इंडियन आर्मी को प्रेशराइज करिकी ताकर रोहिंग्या रेफ्यूजीज मानक पई दे आर ट्राइंग टू गेट सम कंसेशन, राइट? सो दैट इज देयर मेन गोल। So for that reason we cannot call them as terrorists. But problem is कि they are also creating माने nuisance in India also. So what are we going to do? Now in this case we are going to have joint military operations. Joint military operation माने India plus Myanmar माने जे भी bordering country दुई जन जाक ऊपर armed forces माने मिसी की operation करिवे against a common enemy. And এই केस ओटा हेतला operation sunrise बोली कहि कि Arakan army against it. For example हमें पर अच्छा चलो म्यांमार केस भी देखिया कि Arakan army आउ कोन कोन सब करिथिले, कोन कोन तांकर steps नि आइछ। In general, are you able to understand this framework? What are the problems and what are the solutions? Okay. अब दुईटा बस सेक्शन अछि। Now come to maritime boundary threats. हमें कहीं के एते डिटेल ए सब जिंस पढुछ बाय द वे सी
maritime boundary threats, देखियो if you see the previous year questions, one common PYQ theme जोटा बार बार पचरा है OPSC रे कि हमारा maritime security issues कौन, right, and how can we address it. So this is one theme, दो तीन थर एक same question पचरा है. So from that we can understand कि this is an important topic. So try to understand कि what are the maritime boundary threats. For example, the threats are first and foremost aggression by the state actors. माने होची से कंट्री रो जो माने स्टेट एक्टर माने नेवी हेते परंती तांकर माने गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी. So Chinese navy actually with South China Sea they are trying to expand. Similarly, Sri Lankan navy in Indian Ocean they are also trying to dominate. For example, आमे देखिलु एबे Tamil fishermen case रे जिन जाइतला. So this is also one threat to our maritime boundary. Now what could be the solution to this? Again here you cannot write about war. तो आमे कौन कहू diplomatic talks हो, bilateral diplomatic talks through रे धीरे धीरे bilateral maritime boundary agreement हो जो जो country को संगरे हमरो एमिते issue होची. For example जदि श्रीलंका नेवी संगरे issue होची then we should call to the talks table the Sri Lankan navy and I am बसिकी agree करिवु कि हमारा maritime boundary कोठी हो. For example, if India is now demanding कि कच्चा तेहु आइलैंड को भी इंडिया रा मैरिटाइम बाउंड्री भितर आना जाऊ तो आगु जदि एमितिया बाउंड्री थिला ना विल से कि बाउंड्री टा कोन चेंज करी एमिति कर दिया, राइट. So this can only happen through diplomatic talks. Similarly, we can also form alliances for collective security. Means collective security ପାଇଁ କିଛି country माने गोटे देखो ए सब जिंस उडा हला country भितर माने गोटे country directly deal କରୁची with its rival country. बट बेले बेले कौन हो जिते आमर ऑपोजिशन टा बहुत पावरफुल थी. So then smaller countries माने कौन करिवे they will try to or other countries what they will try कि they will try to come into a common block, right. So India, China, Japan and Australia now together they have formed this quad grouping and to counter China. So this is what this is known as alliance for collective security. So quad is specifically targeted to Indian Ocean region. Similarly, we can say कि maybe we can do similar things in India's own neighborhood also. For example, suppose Sri Lanka संगे हमरो issue होची आमे कहबू कि चलो आमे इंडिया बांग्लादेश संगे मिसी गोटे alliance करी. एबे देखो although Indian navy is much more powerful than Sri Lankan navy, but गोटे alliance करिवार गोटे psychological impact भी अछि, गोटे huge pressure पकेयो अन्य country ऊपर कि please don't attack us, otherwise you have our friends with us. You are not only attacking India, you are also attacking Bangladesh. Now that will work as a deterrent, right? So that the other country will not do these kind of activities. Then what else could be maritime threat? Piracy and armed robbery in coastal seas. Piracy माने कौन? Piracy comes from the word pirates. Sea रे जो pirates माने थांदी जो माने non-state actors. See, these are all non-state actors. Navy is a state actor, but pirates are non-state actors. For example, you must have known Somalia. Somalia is infamous for a lot of such sea pirates. Now Somalia government कौन एमन पठाउची pirates कथा जे pirate होजन सेटकार लोकल लोक जो माने कि बहुत ही गरीब एंड सेमानकर आउ किछि जेमती अर्न करियार उपाय नै त माने कोन करिवे माने सीधा बोट रे बसिए and they will try to hijack seas and hijack the ships and ए ship मान को hijack करकी माने ransom demand करिवे और ship रे जहा मनी थिवो जहा भी थिवो से सब नेकी ताको बिक्री करकी साने चली. So these are all the non-state actors. So ए केस रे हमरो solution कौन हबो? Again joint military operation हमें करिया नेवी भितर कोऑर्डिनेशन करी. Although let me tell you कि इंडिया केस रे पायरेसी टा एते प्रोमिनेंट नुआ हमर सेमती कोनसी कोस्टल एरिया रे एठी पायरेसी किछि हो नै होजी कोठी एठी जो अफ्रीका रे अछि. फॉर एग्जांपल इफ एनी Indian ship is going to this and through this it is going to Gulf countries, then here the danger is here there are pirates. Okay. But suppose pirates एठी अछंती तो आमे कोन करिया कि जेमती इंडिया रे अछि तो केवल तो इंडिया रो शिप जाउनी ना एठी इवन चाइना रो शिप भी बाट दे जाउछ एठी फिलीपींस रो शिप जाउछ मलेशिया रो शिप जाउछ तो आमे कहया कि आमे समस्त रो नेवी मिसी की ए एरिया टाको पेट्रोलिंग करिवो. पेट्रोलिंग कले कोन हबो जॉइंट मिलिटरी ऑपरेशन एंड पेट्रोलिंग करिया द्वारा आमे ताको काउंटर कर परिबो. राइट. सोमालियन पायरेट्स कथा मु एठी मेंशन करछि. फोर्थ पॉइंट इज समथिंग व्हिच इज नोन एज मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस.
and intelligence sharing. What is the meaning of this maritime domain awareness? It means that a country should always be aware कि यार maritime domain, suppose India ର maritime domain ହେଲା ଏଇଟା Bay of Bengal ଗୋଟେ ପଟେ Arabian Sea. So the country should always be aware of its domain कि ଏଠି କ'ଣ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଏମିତିଆ ନ ହେଇଯାଉ କି ଦିନେ ସଡନଲି ଏଠି ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଶିପ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଆମକୁ ଜଣା ବି ନାହିଁ କି ସେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ବାଟ ଆସିଲା କେମିତି। ସୋ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ଡୋମେନ୍ ଆୱାରନେସ୍ ମାନେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସୁଡ୍ ବି ଆୱାର କି କୋଉଠି କୋଉ ଶିପ୍ ମୁଭ୍ କରୁଛି ଅର୍ ନେଭାଲ ଆସେଟ୍ କୋଉଠି ମୁଭ୍ କରୁଛି, ରାଇଟ୍। एंड सेकंड पॉइंट इज इंटेलिजेंस शेयरिंग अमंग स्टेट्स मीन सब कंट्री माने जो ए एरिया रे जार भी शिप जाउची से माने आमे आमो भितरे कम्युनिकेशन जारी रखु आमा आमो भितरे इंटेलिजेंस शेयर करू। फॉर एग्जांपल सपोज इंडिया रो शिप एठी जाउची आउ सपोज ऑस्ट्रेलिया रो शिप भी ए बाट दी जाउची, सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कोन करे सब जिंस शेयर करे। फॉर एग्जांपल इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन दबो कि ऑस्ट्रेलियन नेवी को कहबो कि देखो এই এরিয়ারে এই লাস্ট 2-3 দিন ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ପାଇରେଟ୍ସ ମାନେ ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି, so be careful. So now when the Australian ship will go, naval ship, they will be careful, right? This is the meaning of information sharing. And in fact to do this we already have a mechanism. यार नाम होची information fusion center on Indian Ocean region. Indian Ocean region रे cooperation ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରୁଛୁ, that is known as information fusion center, IFC. And specifically if you understand the political overtone, it is specifically targeted against China and Russia रो माने maritime activity को control करिया पे US रो जो माने partners माने से माने मिसी के एजेंसी रो करछंती, including India. India is also a member. Similarly, what are the other issue? Maritime movement of terrorists and militants. ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ डिस्कस କରିଥିଲୁ कि 26/11 मुंबई attackers माने आसीथिले maritime route रे मुंबई को आसीथिले। सो आमे कौन कहे यार सॉल्यूशन कौन हबो ना आमे कैपेसिटी बिल्डिंग कर देबो स्टेट कोस्टल पुलिस और एससीपी रो आ इंडियन कोस्ट गार्ड रो, राइट। सो दैट एई भले जदी जिंस किछि हबो देन दे विल बी एबल टू कंप्रिहेंड, दे विल बी एबल टू स्टॉप देम। सिमिलरली मैरीटाइम ह्यूमन ट्रैफिकिंग होची, रोहिंग्या रेफ्यूजीज माने आछंती, तो तांको आमे केमिति काउंटर करिवु, जॉइंट पेट्रोलिंग बाय स्टेट कोस्टल पुलिस and Indian Coast Guard, right? And in maybe you can also hear right ki with help of Indian Navy also. हमें देखी दिलु से ये बड़ा लेयर रे थिला रे स्टेट कोस्टल पुलिस थिला, एटी आईसीजी थिला, एटी इंडियन नेवी थिला। So all of them if they cooperate with each other then we will be able to also stop the maritime human trafficking. Similarly straying fishermen issue हमें कथा होतुली, श्रीलंका रे केमति हमर इंडियन फिशरमैन माने तमिल फिशरमैन माने जाई फसी होछन, तो यार सॉल्यूशन कोन? bilateral talks of India Sri Lanka भितर। Similarly, you can also use technology to also prevent this issue. Specifically, we have created two things called Gagan and Gemini. Basically, Gagan and Gemini under कौन होची, हमें कौन करचु हमरो सैटेलाइट रू इंफॉर्मेशन नेगी हमरो तमिल जो फिशरमैन और जो भी फिशरमैन इन कोस्टल एरिया रे अछन तांको किछि सैटेलाइट फोन्स दो। दीज आर सिंपली सैटेलाइट फोन्स, मीन्स एटा नॉर्मल फोन कौन जेमती जियो और एयरटेल जहाँ भी हो एटा काम केमितिया करूची, लैंड बेसिस रे एठी गोटे टावर अछि, सी किछि एरिया कवर करूची, एतिकी टावर भितर जति यूजर्स अछंती दे आर एबल टू एक्सेस इट। बट जतले के जने सी को जाउची सब टावर गुडा तो एठी ही अछंती ना, तो मे बी एतिकी एरिया भितर तांकर पर्यंत सिग्नल जिवा ता डीप को तो सिग्नल जीवा नाही। तो फिशरमैन माने तळे इंटरनेशनल बाउंड्री पारे जाउछंती से माने जानि पारु ना दिस इज द इशू। नाउ तांक पारे सैटेलाइट फोन थिले कोन हबो, नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट विथ देम। एबे तांको फोन करके सैटेलाइट फोन ने कहजिबो कि बाबू तुम्हें इंटरनेशनल बाउंड्री पाखरे पहुंची गलणी, नाउ यू कम बैक। एंड एक्चुअली दिस इज द मेन रीजन कि काहे फिशरमैन माने एते असुविधा रे पडुछंती। दुईटा रीजन अछि, फर्स्ट कथा हला कि चलो एते डिटेल हम जीवन पर देखियो। कैन एनीवन गेस बाय द फिशरमैन माने कहीं कोन, इज इट द ओनली रीजन कि फिशरमैन माने जानि पारना कोठी इंटरनेशनल बाउंड्री अछि सेति में माने क्रॉस ओवर करि छथि, देन श्रीलंकन नेवी आसी नाम धरनु। इज इट द ओनली रीजन काहे कि समाने सब बळे बार बार इंटरनेशनल बाउंड्री पारे जाउछन, मैरीटाइम बाउंड्री? कैन एनीवन गेस और डू यू नो? ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଭଲ ମାଛ। वेरी गुड,
ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହଉଛି ଯେହେତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଷ୍ଟଟା ଏତେ ଡେଭଲପଡ ହେଇଛି ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ଯେତେ ବେଶୀ କୋଷ୍ଟଟା ଡେଭଲପ ହବ ତାର ସେତେ ବେଶୀ ପଲ୍ୟୁସନ ୱାଟର କୋଷ୍ଟାଲ ୱାଟରରେ ପଡିବ କୋଷ୍ଟାଲ ୱାଟରରେ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ସାଇଡରେ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଫିଶ ବେଶୀ ପଡୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଫିଶ ଧରିବା ପାଇଁ ବେଟର କ୍ୱାଲିଟି ଫିଶ ଧରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଡେପ୍ଥକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି କଥା ହଉଛି ଏଠି ଯୋଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କୋଷ୍ଟ ଏରିଆଟା କ୍ଲିନ ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି ବେଶୀ ଫିଶ ଏଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣି ଜାଣି ବହୁତ ଟାଇମରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବାଉଣ୍ଡରୀ ପାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଆ ସେମାନେ ଭାବିକି କି ସେମାନେ ବଟମ ଟ୍ରଲିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ୟେସ୍ ବଟମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟ୍ରୋଲିଂ ଅପୋଜ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛି। ଯୋଉଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଏନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଓକେ ବଟମ ଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି again why they are doing bottom trolling can you tell bottom ମାନେ trolling ଭଲ ଡାଇଭର୍ସ, ମାନେ ଭଲ ଫିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ପାଇବା ପାଇଁ no not ଭଲ ଭଲ fish କେବଳ ନୁହଁ fish haul ଅଧିକ itself ମାନେ yes ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ୟୁଜ କରିପାରିବେ। quantity ଅଧିକା exactly but then same thing they can also do in Indian coast why they are doing this in the Sri Lankan coast again because number of fish is more there why is number of fish more there because this is less developed ତେଣୁ ତାର ଏରିଆଟା ଏଟା କ୍ଲିନ୍ ଅଛି right so ଗଗନ and Gemini ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ satellite through ରେ we are able to communicate and if you see one of the benefits of Gagan is also that through this we are also giving them information on potential fishing zones. Potential fishing zones or PFZs are areas where through satellite we are seeing that there are more number of fish. So specifically ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଦେଖ ତମେ international boundary cross କର ନାହିଁ rather ତୁମେ ମାନେ particularly ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଅ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଅ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଅ ଏଠି ଗଲେ କଣ ହବ ଏଇଠୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କି ଏଇଠି ବେଶୀ fish ଅଛନ୍ତି right so now they don't have to cross over to the international boundary. So this is how we can use technology to prevent this issue of straying fishermen. कि आमे श्रीलंका नेवी संगरे by the way, can you mute your audio? Our audio on ଅଛି इंडियन नेवी संगरे सॉरी श्रीलंका नेवी संगरे आमे झगड़ा करिबु नाही रादर आमे हमर फिशरमैन मानकु सिखेइबु केमिति ସେମାନେ इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करिवे नाही ता द्वारा एंटायर इशूटा अवॉइड हेइजो rather than escalating this into a bilateral crisis. Okay. Similarly, last few points are there. Let us try to finish this before giving you a break. How कौन problem होची ना किसी evolving threats अछि which we are calling it non-conventional war. हमें एटा discuss करथिलु war by other means कि आगरो conventional war थिला face to face एबे non-conventional war ही होची. For example, cyber war through proxies माने for example terrorism where proxies माने होची instead of Pakistani army coming to India they are sending proxies means terrorists. Similarly drone use करी information war माने इंडिया को बदनाम करी तो these are the different types of non conventional war. तो यार solution कौन होगा I will do capacity building of armed forces personnel माने आम आम सोल्जर मान को ट्रेनिंग दबु ये सब जिनस केमती हाउ टू हैंडल दिस फॉर एग्जांपल साइबर वार सपोज होची तो आमर आमे कोन डिस्कस होती ना एनसीआईपीसी गोटे अछि नेशनल सेंटर सॉरी नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर एनसीआईपीसी तो आमे ई भले कैपेसिटी बिल्डिंग करी हमर आर्म्ड फोर्सेस रो हो किबा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन ପାଇଁ ଯାହା ବି ऑर्गेनाइजेशन अछि सिमिलरली किछि हमर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ପାଇଁ चैलेंज आछि अल्टरनेट सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ପାଇଁ हो किबा इंफॉर्मेशन सॉरी इंटरनेट ऑफ थिंग्स ପାଇଁ हो we had discussed कि what are the emerging technology तो याको केमिति हमें काउंटर करियो गोटे भलो एग्जांपल दे परियो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एबे गोटे नुवा डिवीजन क्रिएट करछि व्हिच इज नोन एज न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी सो न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी माने होछि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी टा केमिति हम एक्सटर्नल अफेयर्स को अफेक्ट करछि तो ताको हमें लेवरेज करके हाउ वी कैन डेवलप आवर एक्सटर्नल अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी तो जेमती नेक्स्ट डिवीजन अछि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रे हमें सेमतिया कहि परियो कि डिफेंस मिनिस्ट्री अंडर रे भी गोटे सिमिलर डिवीजन क्रिएट हो राइट सेमतिया बायलैटरल डिस्प्यूट्स अछि इन शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस बायलैटरल डिस्प्यूट इन शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स माने कोन जेमति कि इंडो पाकिस्तान डिस्प्यूट ऑन इंडस वाटर शेयरिंग तो इंडस वाटर शेयरिंग रे इंडिया कहूची कि पाकिस्तान अधिका पानी नहीं यूज which is also correct पाकिस्तान को हमें 80% पानी हेतरे दे दोछु 20% हमें यूज करछु तो यार सॉल्यूशन कौन हबो बायलैटरल टॉक करो एग्रीमेंट करो
इंडस वाटर ट्रीटी जमती अच्छी IWT से वाला सिमिलर ट्रीटी करो अन्य वाटर शेयरिंग पे एंड IWT शुड आल्सो बी चेंज्ड एटा भी बहुत आउटडेटेड हे गलानी तो याको भी हमें अमेंड करिया दरकार तो जहाँ भी बायलैटरल डिस्प्यूट होची नेचुरल रिसोर्स को शेयर करिया नहीं सो वी आर आल्सो ट्राइंग टू चेंज दैट आल्सो and lastly there is also a lack of development in villages near borders border area रे जो village गुड़ा अछि सेठी usually देखियो level of development is very pathetic यार reason भी तुम्हें regional disparity रे भी पढ़ी थी can anyone guess what is the reason ରହୁଛି कथा clearly सुना कौन कहले କ୍ୟାପିଟାଲ ରୁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି very good ଲିଟରାସି ରେଟ୍ କମ ଅଛି this is the main reason capital और जो center of power जोड़ा थिबो ताठु जत्ते दूर रे गोटे एरिया रे गोटे पेरिफेरी रहइबो सेते लेस डेवलप हेइ जिवो so गोटे कंट्री रो बॉर्डर एरिया will always be less developed than its central areas in general तापर भी बहुत सारा फैक्टर अछि बट दिस इज द मेन रीजन बिकॉज कैपिटल रू और सेंटर रू बहुत दूर रे अछन तो याको काउंटर करियार उपाय हला एई सब जिंस बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP गोटे अछि BADP आ गोटे हला VVP तो ई दुइटा को स्कीम विषय डिटेल ले या पर भी दिया है जी एठी दे लिखि जी go through it you will be able to understand कि कौन एथे काम होछि by the way don't need to write about these schemes in detail केही भी पचारिबेन डिटेल ले answer रे कोन solution if you just able to mention the schemes then also it is enough so examiner will know कि okay you know what is the solution to this kind of issue lack of development of villages जदि अछि ताले हम BADP and VVP भलिया स्कीम को हाथ को नबा and finally conclusion में you can write the similar points village participatory approach to border security no for example village volunteer force को use करियो local participation हेले कोन हो border management टा better हेइयो or you can also write about these two topics BADP और VVP भलिया कि we should implement these schemes effectively and यार किछि point यदि if you can write then also fine otherwise also just mention this this will improve our border management so this is for the first topic let's take a 5 minutes break we'll meet after that and you can ask me if you have any doubts then you can ask me 5 minute break नहीं
Am I audible? Yes, sir. Okay. Let me share my screen. ଏବେ screen share ହେଇଛି? Yes, sir. Okay. So ଆମେ बहुत सारे जिनस देखिलु पूरा एंटायर फ्रेमवर्क आमे बुझिलु कि बॉर्डर मैनेजमेंट रो ओवरऑल फ्रेमवर्क कोन से केते जिनस आमे कवर कलु जियोग्राफी रिलेटेड इश्यूज कोन अछि आर्टिफिशियल बाउंड्रीज एंड नेचुरल बाउंड्रीज तापरे टेरिटोरियल एग्रेशन और एक्सपेंशनिज्म देन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीपल एजेंसी जो अछंती से रिलेटेड आमे देखिलु कि स्मार्ट फेंसिंग एंड इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स रो कांसेप्ट्स कोन and intelligence sharing the issues kono then we saw that what is the meaning of smart fencing or virtual fencing we saw ki what is the point of having surgical strikes joint military operation kahin kara jaye ko case re kara jaye then we also saw ki maritime boundary case re kon threats achi aggression by other countries similarly piracy jo हुए armed robbery हुए तो ये सब यार सॉल्यूशंस कौन हबो ओके वी सॉ कि फिशरमैन जो स्ट्रेइंग फिशरमैन इशू अछि फिशरमैन माने काहे की क्रॉस करचंती इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री को एंड तार सॉल्यूशन कौन ही पारे राइट सिमिलरली नॉन कन्वेंशनल वार और न्यू काइंड ऑफ वार सब कौन डिफरेंट टाइप्स एंड तार सॉल्यूशन कौन हबो हाउ वी कैन डेवलप आवर capacity of the armed forces personnel emerging technology related threats को handle करिया पे and then finally development of border areas केमिति आमे develop करी ओके और काहे की करी so in this if you have any doubts बहुत सारे जिनसे तरह cover हला if you have any doubts specific please ask को part बुझे हला सर जदि किछि कंट्री स्पेसिफिक आसला तो माने ई कॉमन पॉइंट को भी हम देख परियो yes yes देखि पारियो कोन देखिया कथा या पारे भी एमती भी कंट्री स्पेसिफिक को भी या पारे हम जाउ एबे हम कंट्री स्पेसिफिक देखु specifically they will ask you either question on Pakistan or China but apart from that also I have also included few other countries Myanmar Bangladesh question ଆସିବ ତି ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ country specific ବି ଯିବ but ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ତମକୁ broad framework ଦେଇଥିଲି so that suppose ତୁମ country specific ବି କିଛି ମନେ ନ ପଡିଲା you can write this broad framework and get a good answer right କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ନ ପଡିଲା emerging technology ର threat ହେଇପାରେ maritime boundary threat ହେଇପାରେ right so you can write this is a common framework that you can write for many different things देखो कॉमन फ्रेमवर्क माने नुह कि जेनेरिक पॉइंट इनफैक्ट इफ यू सी दिस इज हाईली स्पेसिफिक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स अछि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स विषय लिखा अछि शकतकर कमिटी विषय लिखा अछि स्मार्ट फेंसिंग अंडर specific terms have been given bold qit cibms so framework doesn't mean generic points we are writing rather very specific points but framework is something जोटा कि once tomorrow if you are able to understand then you can change and माने क्वेश्चन और डिमांड हिसाब रे तुम चेंज करके भलो आंसर लिख पारी ओके rather than me giving you fixed content कि पाकिस्तान ना असले ये पॉइंट लिखियो चाइना ले एटा लिखियो चलो सेटा भी तो परे आसीया हम but I have given you a framework that you can use for different kind of questions जते बुले के पकई बदे टिके डिफरेंट करके पकई हुए still you will be able to write a good answer that is our purpose any other doubts in this if you see बहुत सारा concepts इतरे अछि ओके मु बहुत भी बेसी डेप्थ रे each and every concept ऊपर आसे rather एतरे बहुत ही broad and horizontal basis रे जाय छी right in fact if you see for example smart fencing ऊपर डिटेल रे पढियो दी you will also understand कि एतरे बहुत जिंस अछि but exam रे ते सारा जिंस लिखि हबा नाही there will not be a scope directly question आसीन कि smart fencing ऊपर लिखो discuss what you mean by smart fencing right ए वाला question आसीन rather question will be कि what are the main territorial threats to India okay what has India done about it and how can we counter it these will be the questions right ठीक है then let's come to this part maritime security बार बार
PYQs रे पचरा जाउची. So I thought कि let's have a specific content on maritime security. Now maritime security जदि question आसला OPSC रे introduction कौन लिखियो basic introduction कि आमर इंडिया रो कोस्ट लाइन जो होची 9टा स्टेट और 4टा यूटी थ्रू रे जाउची vast length if you see you remember कि India has a long and porous border and also there is an absence of physical barrier remote location ये सब जिनस अच्छी तेणु यहाँ पे this poses a threat to the coast of India means जेहेतु एते सारा states and union territories भितर दी जाउची coast plus it is a long and porous coast physical barrier किछि करा जाई परिबो नहीं because of the sea therefore we are facing a lot of issues so this is how you introduce it for example 2611 attacker माने भी हम देखिलु maritime route रे आस्थिले now what are the different types of maritime threats maritime terrorism piracy and armed robbery ये सब जिनस directly or indirectly we have already discussed I have just given a list सेमते ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड इलीगल इमिग्रेशन होची मैरिटाइम रूट रही परियो ओशन थ्रू रू और सी थ्रू रू आसीए ड्रग स्मगलिंग एंड नार्को टेररिज्म राइट ड्रग स्मगल ही परियो आर्म्स एंड एमुनिशंस को स्मगल करा जी परियो illegal cross border trade in goods can also happen okay remember see even normal goods for example किछि suppose हमरो you know this or not जामदानी साड़ी ठीक है पढ़ी थी आर्ट एंड कल्चर रे को स्टेट रे एटा प्रोड्यूस हुए कैन एनीवन टेल मी वेस्ट बेंगल वेरी गुड वेस्ट बेंगल रे जामदानी साड़ी प्रोड्यूस हुए तो वेस्ट बेंगल रे कोन अछि किछि लोक कोन करिवे ताको इलीगली नेकी बांग्लादेश रे हायर रेट रे ताको बिक्री करिवे तो जामदानी साड़ी क्वालिटी इंडिया रो जोटा तार क्वालिटी टा बहुत भलो बांग्लादेश से सेम साड़ी क्वालिटी ना माने यूजुअली बहुत चीप रेट रे तयारी करन प्रोड्यूस करन क्लोथ्स तो देखो गुड्स कहार ऑडियो ऑन अछि काइंडली म्यूट योर ऑडियो देखो गुड्स माने नहीं कि गुड्स इटसेल्फ शुड बी कॉन्ट्राबैंड लाइक खाली आर्म्स एंड एम्युनिशन हबो बॉम्ब हबो ताहाले जाय कि हम ताको बैन करिया देखो जामदानी सारी गोटे नॉर्मल गुड बट इफ यू आर इलीगली ट्रेडिंग इट मींस यू आर नॉट पेइंग एनी टैक्स इलीगल पेमेंट माने कोन एटा सेम जिंस एक्सपोर्ट भी परथाना एक्सपोर्ट हेले कोन ऑफिशियल चैनल थ्रू रे यू आर एक्सपोर्टिंग you have to pay a tax to the government also बट इलीगली हेले कोन हबो डायरेक्टली जो लोक जो ट्रेडर नै कि बांग्लादेश रे डायरेक्ट बिक्री करियो तार बेसिक प्रॉफिट हो बिकॉज़ ताको गवर्नमेंट को मझरे किछि दवा पड़िबो नै so due to these reason what they will do ki these people also there are many such goods jamdani sari I gave you an example because यार अभी बहुत ट्रेड तो बहुत सारा नॉर्मल गुड को भी इलीगली ट्रेड करा हुआ है थ्रू द कोस्टल रूट राइट सो दिस इज आल्सो एन इशू वी आर ट्राइंग टू स्टॉप दिस कि नॉर्मल तुम्हें ऑफिशियल चैनल रे ट्रेड करो सो दैट गवर्नमेंट विल आल्सो गेट सम शेयर राइट सिमिलरली काउंटरफिट करेंसी फेक नोट विषय में कथा कैटल ट्रैफिकिंग आमे कथा हलो केमते इंडिया रो कैटल नै कि गाय नै कि सेठी बीफ करके बिक्री करा होछ स्ट्रेइंग फिशरमैन इशू देखि disputes over maritime boundary islands okay similarly disputes over maritime natural resources natural resources like fishing areas हे पारे polymetallic nodule हे पारे there are many PMNs जहाँ कहते it can be some oil reserves जोड़ा समुद्र भितर थिबो right oil and gas reserves natural gas भी हे पारे so these are all what these are all natural resources तो suppose कौन है one country will say कि this is my area more territorial area भितर आसुची because they want to or more exclusive economic zone भितर आसुची because they want to have control over that resource so these are the different threats or maritime issues that the country usually faces right now what can be the different coastal security agencies and platforms which what type of different coastal security agencies we already have okay and in this I will give you a note on this chapter I think already what दिया ही चाहिए various security forces and their mandates India specific note दिया ही चाहिए maybe open channel रे share ही और group रे दिया चाहिए मोर मन नहीं but I think it has been shared somewhere I'll just check सर जब ग्रुप share रे हो तेरा नहीं आउटरे चेक कर दो ठीक है कोई नहीं ग्रुप रे आउथर शेयर कर दी अदरवाइज व्हाट आई विल डू कि इंडिया संगे ओडिसा को ऐड करके एका संगे आउथर ग्रुप रे शेयर करियो आई थिंक जोटा ऑलरेडी शेयर यस हेतला सर सेटा ओनली इंडिया स्पेसिफिक थिला ठीक है
ओडिशा रो किसी सिक्योरिटी एजेंसी को ऐड करी शेयर दैट थिंग। तो सेही चैप्टर को आमे डिटेल ले बुझार पॉइंट किछ नै बिकॉज़ सेटा बेसिकली कोन है तो सिक्योरिटी फोर्स थिबो तार किछ डिटेल लिखा हिथिबो। एंड आई विल आल्सो टेल यू कि चैप्टर टा इवन यू कैन स्किप ऑल टुगेदर। जो चैप्टर रो मेंशन हिची वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, ओनली जस्ट रिमेंबर द नेम्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस। एटी जेमति मु सिक्योरिटी फोर्सेस नो नेम देछि ना, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, राइट, स्टेट कोस्टल पुलिस, कस्टम्स मरीन ऑर्गेनाइजेशन, आईएफसी, आईओआर, एनसीएस, एमसीएस। तो एई वाला केवल किछि सिक्योरिटी फोर्सेस नो नाम खाली मन रखते, खाली नेम ड्रॉप करियार अछि। हमको एक्सप्लेन करियार नहीं कि तेरे इंडियन नेवी कोन, तार काम कोन, आईसीजी कोन, बिकॉज़ डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन आसीबो नाही मोस्ट लाइकली। इवन यूपीएससी रे भी आसे नाही, ऑल्दो यूपीएससी रे ए चैप्टर भी अछि। So I have just given you a list of agencies that you can name drop. जदि आसिला coastal security विषय किसी भी आसिला, then you can, in the way forward or solution, you can write कि these are already institutions which exist. We can strengthen these forces. Right? सेमिति hang on a second. जेमिति एगुड़ा सब usually national. See, IFC IOR is not national, by the way. It is a group initiative. तो सेमिति किसी international और regional initiatives भी अच्छी. Okay. What are the regional initiatives? Indian Ocean Rim Association. This was earlier known as Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation, IORARC. In fact, this was asked in UPSC prelims रे भी एटा पचरा हितला, IORARC भी और IORA ऊपर भी क्वेश्चन पचरा, दुईटा ईयर रे पचरा हिची। So that means this is an important institution. Indian Ocean रो लिटरल स्टेट्स माने इंडियन ओशन को घेरी रहिता जो कंट्री गुडा, they are all the members, most of them are members of this association. So we can say कि Indian Ocean Rim Association को आमे रो participate करिवु, this is a good platform. सेमिति आमे डिस्कस करथिलु IFC IOR Information Fusion Center in Indian Ocean region. Indian Ocean Dialogue itself comes under IORA. Indian Ocean Rim Association नो dialogue टा को कहा जाय Indian Ocean Dialogue. सेमिति इंडियन ओशन नेवल सिम्पोसियम गोटे आयोन्स बोली अछि, एथरे कोन नेवी चीफ्स ऑफ इंडियन ओशन लिटरल स्टेट्स माने मिसिकी कॉन्फ्रेंस करन। जेमति कि इंडियन ओशन रो आखवा को घेरी रहिथिया जो कंट्री गुडा अछंती, से सब कंट्री मानकर नेवी रो चीफ माने आसी गोटे जगह बसी बैठक करिवे। से बैठक रो नाम होची आयोन्स। So obviously that means कि ସେମାନେ security issues, Indian Ocean ର security issues विषୟରେ discuss କରନ୍ତି। ସେମିତିଆ quad grouping, you already know Indian Ocean region ଉପରେ quad grouping ଅଛି। So these are the various international or regional initiatives. You can again name drop it, no need to explain कि यार काम कौन तार काम कौन। Okay. These part initiatives on coastal security, again although you don't need to explain it, I thought कि let's give you some points because या भितर किछि किछि एमती स्कीम और इनिशिएटिव्स अछि, or you can even say कि किछि ड्रिल्स अछि, एक्सरसाइज अछि, which will also have impact on Odisha. That is why I gave you this part को किछि टिके टिके एक्सप्लेन करा जाय। For example, if you see Indian Maritime Security Strategy, okay, IMSS, यार काम होची कि इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करिया। तो एथे कोन किछि कंट्री मान को डका जाय कि सेमानकर नेवी चीफ मान संगे भी डिस्कस करा जाय कि हाउ टू coordinate with each other and how to secure the sea lines of communication in Indian Ocean. सेमिति terrorism और piracy को counter करिया पे how we can do joint operations. Joint operation centers किछि अछि, this is completely internal by the way, completely India। एथरे कोन होची इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, हाउ किछि कोस्टल पुलिस फोर्स और मैरीटाइम पुलिस फोर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, सेमान को नहीं कि आमे कोन करछु इंटेलिजेंस शेयर करूछु। सेमान को जॉइंट ऑपरेशन सेंटर माने कि एमान को समस्त रिप्रेजेंटेटिव रहिबे एंड दे विल कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर। दैट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट ऑपरेशन सेंटर, कि ऑपरेशन शुड बी डन जॉइंट। सो ए सब जिंस डिटेल जाने दरकार नहीं। कोस्टल सर्विलांस नेटवर्क, वीटीएमएस कोन, इफ यू जस्ट राइट दिस जॉइंट ऑपरेशन सेंटर्स दैट इज एनफ। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम, कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम कोन ना आम स्टेट
मरीन पुलिस फोर्स स्टेट मानकर तांको डेवलपमेंट करिया पे तांकर डेवलपमेंट पे सेंटर होची स्टेट मानन को हेल्प करे एथरे बहुत सारा फंडिंग जाए कैपेसिटी बिल्डिंग पे से ट्रेनिंग करांदी तो सेंटर कौन चाहूची कि जेमिति हमरो आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड जेमिति बहुत डेवलप अछि तार कैपेसिटी बिल्डिंग हिची सेमती स्टेट रो मैरीटाइम पुलिस फोर्स भी डेवलप होंद सो अंडर दिस ओडिशा हैज आल्सो ओडिशा को भी किछि फंडिंग मिलची एंड ओडिशा हैज आल्सो डेवलप्ड मेनी मरीन पुलिस स्टेशंस एमपीएस आमे देखिया नेक्स्ट similarly there was operation sagar kavach 2611 mumbai attacks you would be able to understand देखियो बहुत सारा सिक्योरिटी इशू रे 2611 मुंबई अटैक पर बहुत सारा रिफॉर्म्स आछि इंडिया बहुत जिनस आसी फॉर एग्जांपल नेट ग्रिड आसला ए जो सागर कवच ऑपरेशन आसला ओके so because this was a turning point in indian intelligence agency as well as security forces आमे बुझिलु कि हमर केते गैप अछि in identification of threat as well as responding to threat okay यहाँ पर yes nsg I think nsg was also I think set up after this I don't know just check once यहाँ पर एटा सेटअप ହେଇଥିଲା तापर पर NIA भी आसला okay so 2611 attack was a turning point in Indian security agency or Indian security thinking strategic thinking ठीक है so operation sagar कवच रे कौन हबो ना नेवी संगरे अन्य फोर्स माने जेंति आईसीजी हो इंडियन कोस्ट गार्ड और जो डिफरेंट कोस्टल पुलिस फोर्स और मरीन पुलिस फोर्स ऑफ द स्टेट से सब मिसी जॉइंट मिलिटरी ड्रिल करंदी कि 2611 जेमतिया हेतिला लैप्स से बड़ा न हो so jointly they should all the forces should be able to protect our coast similarly exercise sea vigil again see indian navy icg और cpf मानकर हुए गोटे annually गोटे हुए exercise sea vigil joint military operation then finally there is something which is known as sagarmala project sagarmala कोन जेमति तुम जानिथिबो एटा भारतमाला can you tell me भारतमाला रो काम कोन सर जो रोड बिल्डिंग करियो very good road infrastructure development सेमितिया सागरमाला रो काम होची पोर्ट लेड डेवलपमेंट मीन्स पोर्ट को डेवलप करिया एंड ता थ्रू रे हम कोस्टल एरिया को डेवलप करिया राइट सो दिस इज अ पोर्ट लेड डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल एरियाज माने जदि हम पोर्ट को डेवलप करिया ताले हेतरे ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ियो प्लस एतरे किछि लोकंकर एम्प्लॉयमेंट बढ़ियो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हेले तारो डोमिनो इफेक्ट पड़ियो लोकल इकोनॉमी ऊपर सो दिस इज द पॉइंट ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट एंड दिस आल्सो विल डेवलप द पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर माने न्यू पोर्ट भी ही परियो प्लस पोर्ट मॉडर्नाइजेशन भी ही परियो माने पुराना पोर्ट गुडारे पैसा देगी तांको हम मॉडर्नाइज करी सो दिस विल आल्सो हेल्प इन कोस्टल सिक्योरिटी और नॉट एबे तमे कहि कि एथिरे यार कोस्टल सिक्योरिटी संगे कोन मतलब द पॉइंट इज सपोज तमे पोर्ट किछ डेवलप करछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो एथिरे सर्वेलेंस भी करियो तो पोर्ट सर्वेलेंस सपोज सीसीटीवी कैमरा रे किछ इनसो सिक्योरिटी रिलेटेड इनसो यू आर एबल टू कैप्चर नाउ दिस विल आल्सो हेल्प इन नेशनल सिक्योरिटी सिमिलरली पोर्ट डेवलपमेंट रे कोन हो वेसल ट्रैकिंग में जो हम पोर्ट साइड दे की जो जाउछन कोस्टल एरिया रे सेठी को शिप माने जाउछन और को बोट्स जाउछन now this information will also be used by indian navy indian coast guard and they will be able to use this information to better protect india's coast this is the reason sagarmala project how it can help in security now there is a very small note on coastal security in odisha because odisha is something बहुत बेसी coastal security पर नहीं but in if it is asked at all what you can write कि कहयो कि हमर ओडिसा रो 487 किलोमीटर धरि कोस्ट लाइन अछि and specifically it is linking to bay of bengal so therefore it is also vulnerable to security threats for example we have security threats from myanmar we have security threats from bangladesh right so therefore coastal security ପାଇଁ ओडिसा रे कोन हेची हम एटा डिस्कस करथिलु coastal security scheme I was just telling you कि css is important because center is helping the states development of state capacity जो marine police forces of the state should be developed so या अंडर रे कोन हेची सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड 18 marine police stations mps stands for marine police stations in ओडिसा ओडिसा रे 18 टा हमर अछि तार लिस्ट जमा जानिया दरकार नै फॉर एग्जांपल आई थिंक कुजंग रे गोटा अछि बालेश्वर रे अछि भद्रक रे अछि हला जगतसिंहपुर केंद्रापड़ा बट
don't need to go through the details ki ko police station ko reach. Now what is the point, what is the objective of this marine police station now? To prevent threats to the coastal security of Odisha. Here I have forgotten to mention of Odisha. From what kind of threats? Threats of illegal arms, contrabands, contraband means किसी भी smuggled goods, illegal immigrants, very very important. For example, you can write about Bangladeshi refugees. बहुत सारे Bangladeshi refugees. This is our main problem actually in India. कि illegally we are unable to track them and we are unable to prevent their entry. Similarly, there is something which is known as IUU fishing, illegal, unreported and unregulated fishing. Okay. So that means what? Ki government, you are not informing the government, and specifically you are maybe fishing from an area from which you are not supposed to fish from. जो किसी इकोलॉजिकली फ्राजाइल एरिया अछि ओशन न सिटी जाई फिशिंग करूछ. You are fishing in some kind of fishing methods. We are just talking about bottom trawling. किसी fishing method एमती अछि which is banned, but still you are doing it. Bottom trawling रे कोन करती नॉर्मली जेमती जाल पका जाए, बॉटम ट्रॉलिंग रे कोन करती जालटा पूरा डेप्थ रे जाई कि से पूरा सबू को माने एठी पूरा तळ पर्यंत जहा जिंस थियो ताकू पूरा कोन करियो ताकू स्कूप अप करिके एंटायर हॉल को न बसे माने बुझी होची एठी किछि जाल पडुची हो एथरे कम फिश पड़िबे. बॉटम ट्रॉलिंग रे कोन करा जाए गोटा बड़ जाल एमती आ एमितिया जाल से डिजाइन हिची कि से जो सी फ्लोर पर्यंत जाई कि सेठू सेठू जाई कि स्क्रैप करिगी माने सेठू पूरा चांची कि जो कुआ जे पूरा चांची के सब जिंस उठे कि उठे नब. तो या द्वारा इश्यू कौन हुए सी फ्लोर रे बहुत सारा इकोसिस्टम मरीन इकोसिस्टम रो बहुत सारा बेनिफिशियल जिंस थाए. फॉर एग्जांपल एठे कोरल रिफ्स थियो तबे तुमे जाय के परमानेंटली ताकू डैमेज कर दो जदी बॉटम ट्रॉलिंग करियो एथरे बहुत सारा एनिमल्स थिबे. ओके, सेडिमेंटरी एनिमल्स जो सेडिमेंट ऊपर बसंती बाय द वे दे आर आल्सो नोन एज बेंथिक स्पीसीज. सो बेन एटा तुमे इकोलॉजी रे पढ़ियो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. सो बेंथिक स्पीसीज माने यूजुअली से कोन करंती से माने मूव बेसी करंती नै तबे तांको जाय के तुम डैमेज करी तांको उठै नै होछ. फॉर एग्जांपल सी अर्चिन्स. ओके, सो बॉटम ट्रॉलिंग देयरफॉर इट इज बैंड, बट दिस इज सो एबे भी किछि लोक जन फिशरमैन करूछन. सो दिस कम्स अंडर दिस आईयूयू फिशिंग, illegal, unreported and unregulated fishing. Okay. So what else is our objective for marine police station Odisha? Also to protect the coastal infrastructure or coastal installations. For example, amaro बहुत सारा cyclone shelters अछि, right? Coastal area रे cyclone shelters अछि ताको protect करिया. And finally to ensure the safety of state fishermen. ओडिसा रो fishermen मानकर safety ପାଇଁ ये सब जिनस ପାଇଁ स्टेट फिशरमैन हो लोकल लोक भी हिथै पारंती, टूरिस्ट माने बेले बेले आसी किछि भासी आंती समुद्र रे. ये सब जिनस ପାଇଁ marine police station is there, right? These are our main objectives. Now can you tell me why it is not included एठी काहे कि ये सब जिनस include हे नहीं piracy or territorial aggression of other countries, ये सब जिनस काहे कि मेंशन हे. Very simple reason. सर सेटा नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट रो काम रे Very good. And how it is also very unlikely. Who is saying this by the way? Who is this? सर सुभश्री. Okay. And also the problem is आमे देखिल ना हमें different area को different force को देइछु. तो यूजुअली टेरिटोरियल एग्रेशन हबो जदी ओपन सी रे हम, राइट? एबे कोड चाइना आसी एति बाटा पहुंचिया पूर्वरु इंडियन नेवी ताको इंटरसेप्ट कर दैते. सो चाइना केबे आसी एठी पहुंचुनी. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया. मरीन पुलिस फोर्स माने अप टिल 12 नॉटिकल माइल्स. तो एठी हमर जहा जहा इशू होजी ए सब जिंस एठी आसीबो नाही. पायरेसी टेरिटोरियल एग्रेशन इनडा यूजुअली ओपन सी रे हम. ओके, so that is the reason amar local jaha jaha issue hobo ta pai amar equip kara jaychi marine police stations, right? This is the point. Any doubts so far? Coastal security of India and Odisha related issue with doubts? Coastal security scheme upare, joint military operations or drill upare. acha chalo auri achi baki achi. Last part let's see. Okay, there is also something which is known as sajag. Sajag kon amar oda security drill. So Indian Coast Guard every monthly जिनसटा हुए गोटे कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल करे इंक्लूडिंग द कोस्टल पुलिस फोर्स ऑफ द दो स्टेट्स. तो एतरे ओडिसा रो भी मरीन पुलिस
स्टेशन रू जाती ओडिशा मरीन पुलिस फोर्सेस जाती तो यहाँ मेन पर्सपेक्टिव माने ऑब्जेक्टिव कौन टू चेक बोट्स एंड फिशिंग वेसल्स आमर लोकल इश्यू जहाँ जहाँ हम सजाग माने हम सजाग रहा कि कौन चली सेमिति डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस मान रेगुलर मीटिंग्स हुए इंटेलिजेंस शेयरिंग हुए ब्ला ब्ला दीज आर द कॉमन पॉइंट्स ऑपरेशन सागर कवच रे भी आमर ओडिशा पुलिस पार्टिसिपेट करे सो दीज आर द generic points that you can write सजाग is a very specific point ऑपरेशन सागर कवच is specific point इसको या को लिखी के हाईलाइट कर दो any doubts in this ये क्वेश्चन यूजुअली रिपीट होची देखो ये चैप्टर दुईटा क्वेश्चन इंपोर्टेंट गोटे होची कि ओवरऑल इंडिया को थ्रेट कौन अछि बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज कौन अछि सेकंड हला स्पेसिफिक दे कैन आस्क यू रिलेटेड टू चाइना और पाकिस्तान थर्ड they can ask you what is the maritime security threats to India and Odisha. These two are the main themes of this chapter. Otherwise, they will not ask you very specific points. ठीक है. So then come to this specific border issues. India, China, India, Pakistan. इस जिनसे हम डिस्कस करिए कि कौन-कौन इशू अछि. Now in the note, please go through these maps. Okay. Actually, किसी भी जब starting the note रो map थियो, just first go through the map, then read the note. So if you see this is a very detailed map. जो थे इंडिया और चाइना भितर को एरिया टा डिस्प्यूटेड अछि इट्स वेरी क्लियरली गिवन. फॉर एग्जांपल इफ यू सी दिस इज माय ड्राइंग. इंडिया और चाइना भितर जो बॉर्डर अछि सेटा यूजुअली तीनटा पार्ट रे डिवाइड इच. ओके. सो वन पार्ट इज द वेस्टर्न सेक्टर. दिस इज द सेंट्रल के लिखि सेटा मिडिल सेक्टर. दिस इज द मिडिल सेक्टर and third is the eastern sector. Okay. And here if you can see, wait, let me draw this. Here if you can see, this is Nepal एठी अछि, Bhutan एठी अछि. So ए एरिया रे कोन अछि ना, ए एरिया रे चाइना संगे डायरेक्ट हमर लिंक नै बिकॉज़ एठी नेपाल अछि आ एठी भूटान अछि. तो देन हमर मेन लिंक होछि ईस्टर्न सेक्टर आ वेस्टर्न सेक्टर. सो हमर प्रॉब्लम सब बेसी कोटे अछि जानछ. हमर प्रॉब्लम सब बेसी अछि वेस्टर्न सेक्टर रे जोटा हमर लद्दाख. Then after that we have the main issue is in eastern sector. So main sorry first है western sector then होची eastern sector. Middle sector रे किसी भी issue नहीं. देखो ए part रे भी टिके तिब्बत लागी छी. And because Tibet is part of China, therefore it is also part of our international border with China. But ए part रे किसी भी issue नहीं. Issue होची ये जो specifically Ladakh part रे. This part is known as Aksai Chin. And in this part which is again एठी तिब्बत लागी छी and एठी कोन होची अरुणाचल प्रदेश. Now please remember these lines which are nearby. अरुणाचल प्रदेश संगे ईस्टर्न सेक्टर रे जो हमर बाउंड्री टा अछि से बाउंड्री टा को आगे मैकमोहन लाइन. लद्दाख साइड रे जो बाउंड्री टा अछि गोटा होची जॉनसन लाइन मींस this is the Johnson line and this is another line which is known as McDonald line. Now these are two different lines which are giving two different boundaries. So can you tell me कि इंडिया कोटा चाहो को लाइन टा को मानुची and चाइना को लाइन टा को मानुची between McDonald and Johnson line. सर चाइना माने तो मैकडोनाल्ड लाइन टा इंडिया मान तो Very जॉनसन लाइन टा को. very good. Because आमे जो लाइन टा को मानले हमको बेसी एरिया मिलिबा हम सेही लाइन को मानियो राइट. So therefore India is recognizing Johnson line because आमे यदि Johnson line टा को नबु हमरो इंडिया चाइना बॉर्डर ताले ए एरिया टा हमो एरिया भितर आसीयो लद्दाख भितर आसीयो. किंतु जदि आमे मैकडोनाल्ड लाइन टा को मानिबु ताले हमरो ए एरिया टा पळे जिवो काको चाइना को पळेयो. So that is the reason. Are you able to understand कि बाउंड्री रो गेम गुडा कोन एथरे एबे इंडिया कहयो कि सब सेंसर डिमांड करो नहीं आमे तो जॉनसन लाइन ही माननी छी. एबे चाइना कहयो नहीं जॉनसन लाइन को तो आमे किसी जाननु आमे तो मैकडोनाल्ड लाइन को माननी. राइट. दिस इज द इशू. ओके. अरे यार ये कौन है? दिस इज द मैकडोनाल्ड लाइन. ओके. So if you are recognizing Johnson line as the boundary between India and China, ताले लद्दाख टा बड़ा ही जो, मतलब लद्दाख पार्ट टा को आसजियो अक्साई चीन. किंतु जो यदि मैकडोनाल्ड लाइन टा को आमे मानिबु, ताले आमे लद्दाख टा पळेयो कोठु को जिनजियांग प्रोविंस. माने चाइना को पळेयो.
So therefore India will recognize the Johnson line and China recognizes McDonald line. Now middle sector में तुम कहली किसी issue नहीं because it is a settled border. Okay. एथिरे China भी राजी अछि, India भी राजी अछि. Western sector if you see, because of British era maps and agreements, where Britishers माने Indians representative न नहीं कि ସେମାନେ directly deal करथिले Chinese ମାନଙ୍କ संगे. And सेही टाइम रो maps रे जहाँ जहाँ अछि तर बहुत भूल भी अछि. And now जो पार्ट रे भूल नाही भी सेठी भी चाइना काहे कि सेटा को एग्री करियो. चाइना एबे देखुची कि जो मैप टाकू से डिस्प्यूट कले जो पार्ट टाकू से क्लेम कले तांकू अधिका एरिया मिलियो. Obviously they will claim that. Why will they agree to an old map which is again created by the Britishers? एबे से कोन कहउछन सपोज जो पार्ट रे सन चाइना और ब्रिटेन ब्रिटिश गवर्नमेंट रो आगरो एग्रीमेंट हेतिला. एबे चाइना सपोज ताकू न मानिया को जदी चाहिबो ताले चाइना कोन कहउची चाइना कहउची ब्रिटिश गवर्नमेंट सेबे जो करथिला तारो लोकल स्टैंडिंग कोन अछि मींस तारो अथॉरिटी एबे कोन अछि. ना ब्रिटिशर्स दे वर नॉट द राइटफुल ओनर्स ऑफ इंडिया. सो दे तो ब्रिटिशर्स माने एबे छाडी की पळै छी. सो दैट मींस ये पुराना एग्रीमेंट रो वैल्यू किछ नै. सो नाउ चाइना सेइंग कि मु आमे एबे मानिबो नाही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट संगे जो मैप हिच राइट. एंड इन सम अदर केसेस दे आर सेइंग कि ठीक अछि ब्रिटिशर्स माने जो लाइन ड्रॉ करछन दैट इज आल्सो फाइन बट वी शुड आल्सो को पार्टर से राजी हेबे जो पार्टर तांको अधिका एरिया मिलथियो राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आल्सो. जो थरे हमको लाभ हो हम सेटा को मानी जो थरे हमरो लॉस हो हम सेटा को मानिबो नाही. सिमिलरली इंडिया चाइना वार 1962 रे जो वार हेतला that created the current line of actual control along the McDonald line, which is not good for us because McDonald line is something which is आमको सेटा लॉस होची. सो आमे एटा को एक्सेप्ट करू ना हो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को. आमे चाहू छु कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जगह रे आमे आउट या आगु बढ़ी कि फॉरवर्ड बेसिस एरिया गुडा को आमे आम कब्जा को नहीं. तो सिमिलरली इंडिया कोन कोन गोटे डीएसडीपीओ रोड करची दौलत बेग ओल्डी रे मिलिटरी स्ट्रिप करची. डोंट नीड टू नो ऑल ऑफ दिस. But the point is this part, this concept you should know कि Indian government is now catching up with China with respect to border infrastructure. Because मैं तुमको कहती जो नया गवर्नमेंट आसला परे they are spending a lot and ସେମାନେ बहुत effort देगी. We are trying कि बहुत वर्ष धरि देखो पुराना जो गवर्नमेंट थिला यूपीए गवर्नमेंट ସେମାନେ କିଛି डेवलपमेंट करू नथिले. नया गवर्नमेंट आसला परे this is the credit is where credit is due and they have actually done good work. चलो यार. Now eastern sector रे कौन issue है जी? Shimla Accord. Don't confuse this with and there is another Shimla Accord later on also. এটা 1914 মସିହାରେ ହେଇଥିଲା. This is one of the earliest माने agreement between Britishers and China. तो एथरे कौन हला एथरे मैकमोहन लाइन आसता जोटा एबेरो अरुणाचल प्रदेश जोतरे डिमार्केट हिच. सो एटा के नेगोशिएट करथिले ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी चाइना और तिब्बत माने इंडिया तरफ रो ब्रिटिश गवर्नमेंट जाई चाइना और तिब्बत संगे सतले रिमेंबर सतले तिब्बत रो गोटे अलग गवर्नमेंट थिला पर लोकल गवर्नमेंट थिला. सो तीन जन मिसी के से डिसाइड कले ओके दिस इज आवर बाउंड्री कॉमन बाउंड्री. बट परे कोन हला 1950s रे जतबेले चाइना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पावर को आसला तले से कोन कले तिब्बत को ता अंडर सब्ज्यूम करने. एंड आफ्टर दैट ग्रेजुअली दे स्टार्टेड टू नॉट रिकॉग्नाइज दिस मैकमोहन लाइन. नाउ से कोन कहउछन कि सेतबेले हमर जो साइन करथुले एग्रीमेंट तार कोनोसी वैल्यू नहीं बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल सेटा तिब्बत संगे रहितला. तिब्बत तो सेपरेट एंटिटी ही नो. सेकंड से कहउछन ब्रिटिश गवर्नमेंट तो एबे नहीं एबे तो इंडियन गवर्नमेंट अछि. सो दैट मींस ये जो लाइन हेतला एटा को हम मानिबो नहीं राइट. एंड नाउ दे आर क्लेमिंग एंटायर अरुणाचल प्रदेश एज सदर्न तिब्बत साउथ तिब्बत बोली कहउछन. दिस इज द इशू. Now come to this part, China-Pakistan economic corridor. Again, many of these topics are from current affairs. I know that current affairs maybe some of you might have read in more depth and more detail, so that is fine. For mains perspective, whatever is required, I'm telling you all of those points. तो China-Pakistan economic corridor और CPEC. CPEC टा काहे कि हम पाई गोटे security threat. Why is it a threat for our security? The point is that CPEC is part of Belt and Road Initiative. जाको आगरू को आवतला One Belt One Road Initiative. One Belt One Road.
I hope you know, most of you know what is one belt, one road. And under this Belt and Road Initiative, there are two components. One is the Silk Road Economic Belt. So this is on the land part. Another is the Maritime Silk Route. This is on the sea part. So China is developing its trade and transport routes through this big project, which is known as Belt and Road Initiative. Now, under it would a huge project. Under it, sub projects. For example, BRI रे बहुत सारा different countries माने join करछन. Suppose Myanmar join करछि. एबे Myanmar कोन China Myanmar तांको भितरे link को they will develop. So Myanmar China को जाउथवा जो road टा that will come under one sub project of this overall BRI project. सेमितिया पाकिस्तान भी BRI रो गोटे part. तो पाकिस्तान संगरे China को project करूछि which is under BRI, that is China Pakistan Economic Corridor. The problem कि India को problem काहे की होछि, security threat होछि कि because this CPEC project, this goes through the Pakistan occupied Kashmir. Okay. Pakistan occupied Kashmir भितर देई जाउछि बोली आमे कहूछु कि आमे एतरे in fact India did not join CPEC. One of the reasons, not the only reason, but one of the reasons was that because the proposed CPEC was passing through Pakistan occupied Kashmir. That is why India said कि will not join. तार माने होछि suppose तुम्हें तुम्हारा नेबर संगे तुम झगड़ा चलछि, तुम्हारा नेबर सपोज मिश्र बाबू, सपोज दिस पर्सन इज देयर, ठीक. तो तुम्हें कहूछ कि यू आर सपोज दास बाबू, यू आर सेइंग कि दिस एरिया इज आल्सो माइन. तो मिश्र बाबू तापर कोन करछन्ती, आउ गोटे लोक को डाकी कहउछन्ती मो एरिया थ्रो रे रोड टा हो. मतलब तुम्हें ए रोड रे केबे जीवो कि तुम्हें कह रोड को तो फर्स्ट तुम मानि भी नहीं बिकॉज़ ए रोड टा मो एरिया रे हिच. If you accept this road, that means कि you also accept कि this area belongs to Mr. Babu. That is the problem. Okay. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ କି ଆମେ CPEC ଟାକୁ ମାନୁ ହିଁ ନାହୁଁ and we did not become part of the Belt and Road Initiative. Similarly, border clash of 2020 जो गलवान वैली रे जो क्लास चला, जो फाइटिंग टा हला, this is also part of current affairs. करंट अफेयर्स तो कहया कथा नहीं, चलो याकू कहया कथा कंटेम्पररी अफेयर्स बिकॉज लास्ट किछि वर्ष धरि कि 3 वर्ष हे गेलानी, बट स्टिल इट्स इंपैक्ट इज बीइंग फेल्ट. सो गलवान क्लास पर एक्चुअली इंडिया चाइना रो जो संपर्कटा बहुत ही खराब हे गेला, बॉर्डर इश्यूज टा बहुत बढ़ी गेला. तो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जिंस काहे की हला, तो यार बहुत सारा फैक्टर्स, मेनी डिफरेंट फैक्टर्स आर देयर, बट आई हैव रिटन ओनली द मेजर फैक्टर व्हिच इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी स्पेसिफिकली. border issue related factor टाको लिखिछि, other factors are also there. ना border security हिसाब रे देखिया गले कोन असुविधा हला, हमर स्टार्ट हला एक्चुअली केसाटा एठू 5th August 2019 ने, इफ यू रिमेंबर, हमें कोन कलु प्रेसिडेंशियल ऑर्डर गोटे बाहरला कि जम्मू एंड कश्मीर को स्प्लिट कर दिया हला. तार जो स्पेशल स्टेटस थिला आर्टिकल 370 को हटा हला, धारा 370 को हटेई कि देन वी ब्रॉट इट अंडर अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेथरे भी हमें कौन कलु जम्मू एंड कश्मीर को स्प्लिट करिकी वी क्रिएटेड जम्मू एंड कश्मीर. आगो देखो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थिला विथ इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, स्प्लिट करिकी हमें 2019 में कौन कलु हठात राति अधरे कौन कराला, मोदी जी कहले कि एबे कौन होची जम्मू एंड कश्मीर होची गोटे यूनियन टेरिटरी आ लद्दाख होची आ गोटे यूनियन टेरिटरी. ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट इवन विथ जम्मू कश्मीर. चाइना रो प्रॉब्लम इज नॉट विथ जम्मू कश्मीर, चाइना रो प्रॉब्लम एबे हला लद्दाख. एबे चाइना को कहीं कि एटा प्रॉब्लम हला because it's a try to understand कि यार political reason कौन. China कहले कि first of all Ladakh is a disputed territory. For China it is disputed territory because if you remember इटा होची Aksai Chin, इटा होची Ladakh. Now China is claiming entire Ladakh as part of Aksai Chin. Similarly we are claiming entire Aksai Chin as part of Ladakh. So China said कि जदि हमर गोटे disputed territory इटा थिला, why did you यूनिलैटरली माने तुमे एका सिंगल हैंडेडली यार स्टेटस को कहीं चेंज कल, मते किछि न जानि कि स्टेटस कहीं चेंज कल. दिस इज सिमिलर टू द फैक्ट कि जदि तुमर मिश्र बाबूंकर किछि झगड़ा चली, तुमे गोटे कॉमन बाउंड्री शेयर करछ, तुमे मिश्र बाबू को किछि न जानि कि जदि से बाउंड्री को भांगी देला और बाउंड्री किछि भी चेंजेस आनलो, देयर वुड बी प्रॉब्लम. एटा सब बेले तुमे देखि दियो कि हमें जेतेबेले भी बाउंड्री किछि काम करियो, यू हैव टू इन्फॉर्म द अदर पर्सन, राइट. तुम तुम नेबर को कही कि काम करियो, अदरवाइज देयर वुड बी इशू. बट इंडिया इन्फॉर्म कलानी. इंडिया चलो इन्फॉर्म न करियार भी बहुत सारा रीजन थिला. इन्फॉर्म करिथिले तो कथाटा लीक हि थांदा, पाकिस्तान आडू किछि प्रॉब्लम हि थांदा.
ଆମେ ସେତେବେଳେ ଚାଇନା କଥା ଭାବୁ ହିଁ ନଥିଲୁ। ଆମର ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର। ବଟ୍ ଏଇ କାମ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଲଦାଖ ୟୁଟି ଟା ଗୋଟେ ସେପରେଟ କ୍ରିଏଟ ହେଇଗଲା, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା, ଚାଇନା ଭड़କିଗଲା। So this led to, it is expected that this led to next year कौन है समझे 2019 नु 20 पर्यंत wait कले development official level ले भी बहुत जिनसा चल रहा, then 2020 रे they immediately thought कि we have to respond somehow because otherwise claim again we should have continuous claim. So then they did this Chinese incursions into buffer areas. और समाने 2019 नु 20 पर्यंत by the way कौन कोतली, if you try to understand, I think this happened in June 2020 रे, जून ने आई थिंक हितला जो बॉर्डर क्लास था, अगस्त 2019 ने हला ये इशू था। द प्रॉब्लम वाज दैट सेमाने अगस्त परे भाबो सेमाने मोबिलाइज करथांते तांकर फोर्स को, तो करू करू रेडी हो सितंबर ही था। सितंबर रु सपोज किछि ओडा वार चलथांता, इट कुड हैव इजीली यू कैन सी दैट नवंबर डिसेंबर जनवरी पर्यंत कंटिन्यू करथांता। द प्रॉब्लम इज दिस कि विंटर मंथ रे कोन हबो, ए जो हमरो बॉर्डर एरिया एटा स्नो कवर है, स्नो कवर हेले जदि इफ समवन इज माने कमिंग इनटू इनसाइड ताले से फसी जिवा और रिटर्न कर परिबे। सो चाइना बाध्य होला ता पोस्टपोन करिया को, से किछि न कहि चुपचाप बसिले। जेतेबेले अराउंड 2020 बेलकू नाउ दे डेवलप्ड देयर कैपेसिटी, एंड इफ यू रिमेंबर हाउ दिस हैपेंड, से माने कोन कले अगेन दे वांटेड टू हैव ए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। इंडिया को सरप्राइज करिया पे से माने कोन कले, से माने इमीडिएटली भी जदि रेस्पोंड करथां 2019 ने हमें रेडी ही किथिलु, चाइना पई भी पाकिस्तान पई भी टू सम एक्सटेंट टुवर्ड्स चाइना आल्सो वी आर रेडी। बट 2020 बेलकू जेतेबेले किछि हलानी, हमें टिके कैजुअल हे गेले। एबे चाइना कोन कला, प्रथम कहले कि चाइना कहले कि एठी हम मिलिटरी ड्रिल करूछु, हमें एनुअल मिलिटरी ड्रिल करूछु, व्हिच इज नथिंग रिलेटेड टू इंडिया। सो फॉर दैट रीजन से माने मैसिव एठी आर्मी तांकर गैदर कर, तो इंडिया भी कहला चलो मिलिटरी ड्रिल तांकर करछन, तांकर करंतु, कोन असुविधा अछि। बट देन दे इमीडिएटली चेंज देयर ऑर्डर एंड दे सेड इन्वेड इंडिया। सो दिस इज हाउ दे कॉट अस, माने हमको केमते सरप्राइज कर देल, राइट। And if you see Chinese incursions in सब area hitla, it's not at all required for you to know Pangong Tso Lake, Depsang Plains, Gogra Hot Springs, Demchok, Galwan Valley, not at all required. But that led to, after that it led to Galwan Valley violence. तापर धीरे धीरे कौन हला, it is moving towards solution. Commander level talks हला, diplomacy हला, high level political talks हला. Right now it is moving towards a status quo. Okay, but status quo not, remember status quo ante नुह, मीन्स आगरु जहाँ थिला एक्जाक्टली सेया नुह। इंडिया चाइना बॉर्डर रे किछि बफर जोन थिला, तो ए बफर जोन माने होची बोथ इंडियन आर्मी एंड चाइनीज आर्मी कैन पेट्रोल दिस। बट नाउ द इशू हैज हैपेंड कि बफर जोन रे भी मैक्सिमम पार्ट को चाइना माने कैप्चर करनी छी। सो नाउ दे आर सिटिंग इन द बफर जोन। आगरु कोन होतला, हमें डेप्थ एरिया रे इठी बसिक रहउतला हमर सोल्जर्स माने, चाइना तार डेप्थ एरिया रे इठी बसिक रहउतले, एंड सेतरु मझरे मझरे जाई कि सामाने माने पेट्रोलिंग करी फेरी आस्तले। एबे चाइना आसी इठी इठी आसी बसी छी, एंड आमे एबे भी इठी अछु। सो दिस इज द इशू, दैट मीन्स कि दे हैव कवर्ड सम एरिया। ओके, दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। ओके, सो एनी doubts in this India China border part? बुझियाला बॉर्डर इशू कौन अछि इंडिया चाइना भितरे, ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर? एनी डाउट्स? नो, ठीक है। सो देन लेट अस मूव टू इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इशू. So this will be the last topic of the day, India Pakistan border issue. Let's try to understand कि कितने कौन है इतला. So again go through the map in detail. Map रे बहुत जिनसा अच्छी भला you will be able to better understand कि कौन कौन issue है. If you see the map, I was telling you, see here there is Afghanistan. Okay, इटा होची Gilgit Baltistan, GB, which is the part of Pakistan administered Kashmir. Okay, so आमे कहूँ कि even this Gilgit Baltistan is also part of India, and that is how we are saying कि Afghanistan is our neighbor, because यही part Afghanistan को लागी. But actually if you see आमर केवल एत्ती पर्यंत आमर कंट्रोल अछि, इंडियंस माने एठी किछि नाहंती. Okay, so that is the problem. Now similarly you see एठी देखो सियाचेन ग्लेशियर एठी अछि, राइट. सियाचेन ग्लेशियर ऊपरे ए जो शेडेड पार्ट टा अछि एटा होछि शक्सगम वैली.
पाकिस्तान डरी कि चाइना को ऑलरेडी सक्सेसफुल वैली देदेला कि देख आम झगड़ा कर चाइना संगे एंड पाकिस्तान थॉट कि जदि सक्सेसफुल वैली को आम चाइना को देदेबू ताले चाइना और आमर किसी बॉर्डर डिस्प्यूट रहिबो नाही which is also true to some extent. Okay, but what India did was that India did not leave Siachen glacier. Similarly, this is the Aksai Chin, which we claim under our part of Ladakh. Semana Ladakh is part of Aksai Chin. And here, if you see, these are all part of Kashmir. And Kashmir, if you see, 45% around India pakre achi, and 35% around achi Pakistan pakre, and rest 20%. This is with China in form of Aksai Chin जोटा तमे कहूछ, right? So पुराना कश्मीर मैप देखियो तार 45% इंडिया पाखरे अछि, 35% पाकिस्तान पाखरे अछि। एई पार्ट टा होची जहा को कहूछ हमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके, okay, which is also sometimes called Azad Kashmir. And India part जोटा अछि कश्मीर, that is beyond the LOC. Okay, now go through this map also कि को एरिया रे को बाउंड्री अछि। जो ग्रीन पार्ट टा जोटा सॉरी जो ब्लू पार्ट टा जोटा अछि एटा, दिस इज द सेटल्ड बॉर्डर और सेटल्ड बाउंड्री, दैट मींस इट इज इंटरनेशनल बाउंड्री आईबी। तो एथिरे इंडिया और पाकिस्तान भितर किसी डिस्प्यूट नाही, बट जो ग्रीन लाइन टा एठी देखुछो दैट इज पार्ट ऑफ एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। सिमिलरली देखो सियाचेन ग्लेशियर पाखरे गोटे लिखा है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन एजीपीएल। अगेन दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ अनसेटल्ड और डिस्प्यूटेड बाउंड्री। एंड अक्साई चीन पाखरे जोड़ा अछि ऑब्वियसली दैट इज एलएसी। So LAC, LOC, AGPL, these are all unsettled or disputed boundaries. International boundary इटी बहुत कम अछि ए ऊपर पार्ट रे। Okay. Now I'll tell you a funny story about कि केमिति सियाचेन ग्लेशियर केमिति इंडिया कब्जा रे आसिला। I'm sure कि many of you already know this, but very interesting story. Actually कौन हला सियाचेन ग्लेशियर टा, if you know this, सियाचेन ग्लेशियर को कहा हुए वर्ल्ड रो हाईएस्ट बैटल ग्राउंड। हाईएस्ट बैटल ग्राउंड माने एटा सबुठु हाईएस्ट एलिवेशन थिबा एमितिया गोटे एरिया जोथरे कि डिफरेंट कंट्रीज माने फाइटिंग करछन। अदरवाइज फाइटिंग करथवा ग्राउंड रो एलिवेशन एते हाई रा। तो सियाचेन ग्लेशियर को एबे यूजुअली ग्लेशियर ऊपर किछ सेमती फाइटिंग हुए नाही ना, प्लेन एरिया रे हुए, माउंटेन हुए, डेजर्ट रे हुए। ग्लेशियर को किए जाउछ। सो इंडिया पाकिस्तान चाइना का कुछ फरक पड़ नथला। तो दिने कोन हला, इंडियन आर्मी वेंट टू ए यूरोपियन कंपनी जे की हाई अल्टीट्यूड एरिया पे से आर्मी मानक पे जैकेट्स एंड अदर माने जो क्लोथिंग से तैयारी करथि। एंड इंडियन आर्मी कोन कला तांगे आक पाखरे ऑर्डर गोटे प्लेस कले कि हमको गोटे एमती हाई अल्टीट्यूड एरिया रे पिंदिया पे दरकार। तो ये कंपनी वाला कहले कि अच्छा आपण एबे आसंती माने एई जस्ट किसी टाइम आगरो आउ गोटे कंट्री आसी सी भी सेमते सिमिलर ऑर्डर दैछन। तो इंडियन आर्मी बहुत इंटरेस्ट ला, इंडियन आर्मी कला अच्छा किए दैछन ताले। So they asked the company and that company gave the information कि पाकिस्तानी आर्मी वाला भी आसी किन और ऑर्डर दीछन किनी तो नहीं ना ऑर्डर दीछन गोटे ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्डर दिया है कि सेमान को भी सिमिलर क्लोथिंग दरकार। एबे इंडियन आर्मी रो मुंडा चलला कि माने काहे की से सिमिलर कपड़ा काहे की नउछन एमान को एते हाई एलिवेशन रो दरकार अछि। And with further intelligence they were able to understand कि maybe they want to capture Siachen glacier. And then what Indian army did कि immediately they went and Siachen glacier ऊपर जाइए हमारे बसिया। तो पाकिस्तान आर्मी वाला कौन गले से आगु बहुत सारा प्लान करथिले एठू आमे गरम कपड़ा आनिबा ताको पिंधी की धीरे धीरे जीवा चढ़ी की बसिकी कैप्चर को नहीं जीवा सियाचिन ग्लेशियर को। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମାଜନ ଅର୍ଡର ତାଙ୍କର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଫାଇନାଲି ପିନ୍ଧିକି ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଅଲରେଡି ସେଠି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ଏଠି ବସିଥିଲେ। ସୋ ଦିସ୍ ଅପରେସନ ୱାଜ ନେମ୍ଡ ଆଜ୍ ଅପରେସନ ମେଘଦୂତ। आई थिंक यहाँ पर बहुत मूवी टीवी सीरीज एपिसोड भी यहाँ पर बनी। बट दिस इज अ वेरी फनी स्टोरी, वेरी नाइस स्टोरी ऑफ हाउ इंडियन आर्मी कैप्चर्ड सियाचिन ग्लेशियर। And as I told you, it is called the highest battleground in the world. Okay. सर Yes. सर टिके मोर इंटरनेट कनेक्शन टिके ये गला जो टिके रिपीट कर पाइसे जो ऑर्डर प्लेस करथले कि हाई ऑल्टीट्यूड जैकेट पर कोन सुन पारे।
ସେମାନେ ହାଇ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ରେ ଆର୍ମି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ୟାକେଟ ଆଣ୍ଡ ଅଦର କ୍ଲୋथिଂ पर्सनल गियर ସବୁ ଅର୍ଡର କଲେ ଯୋଉ कंपनी रे अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर अस से सेम कंपनी को जाइए पाकिस्तान आर्मी भी सेम ऑर्डर प्लेस करथिला ओके बिकॉज एट दैट टाइम सेही कंपनी ही सब बेस्ट थिला से टाइप रो गियर तयारी करिवारे जोटा पिंधि कि तुमर आर्म्ड फोर्सेस हाई अल्टीट्यूड एरिया को जाइए फाइटिंग कर परिबे तो जत आउ ସେମାନେ ସେଇ इन्फॉर्मेशन इंडियन आर्मी को ଦେଇଦେଲେ इंडियन आर्मी तो खोलताड़ कला कि किए आउ तुम पाखे एमती ऑर्डर करछि तो ସେମାନେ କହିଦେଲେ कि पाकिस्तानी आर्मी करछि देन इंडियन आर्मी रो माइंड चले कि चले कौन पे पाकिस्तान आर्मी को एरिया को पर्टिकुलरली कैप्चर करिया जाई पारन प्लानिंग करछन एंड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आसिया द्वारा से शॉर्टलिस्ट कले कि okay, चलो मे बी सियाचिन ग्लेशियर इज वन सच थिंग बिकॉज आउ सब एरिया रे देखो इंडिया पाकिस्तान रो एलिवेशन अछि एते भी एलिवेशन नाही कि तुमको एमती पर्टिकुलर गियर दरकार अछि डेजर्ट अछि सी अछि बहुत सारा मैरीटाइम बाउंड्री अछि बट सियाचिन ग्लेशियर ही गोटे फाइनल बाहरला कि जो टाइम मे बी से करूथाई पारंती पाकिस्तान आर्मी ऑर्डर करथाई पारंती तो इंडियन आर्मी जेतले रियलाइज कले से कौन कले इमिडिएटली तांको कहले कि तुम हमको जल्दी दे दियो आग आम ऑर्डर टा दे दियो तांकोटो किणी आनिकी जाइकी से कौन कले इमिडिएटली एयरलिफ्ट करके तांको एठी पहुंचे दिया एयरलिफ्ट पूरा एंटायर एरिया पर्यंत नुह बेस कैंप रु से पुणी चढ़ी जाइकी ऊपर जाइकी बसीगले तापर एमाने धीरे धीरे पाकिस्तानी आर्मी वाला तांकर डेलीवरी हला परे सब जिनस पिंधिला परे चढ़ी जेतले एठी पहुंचले ऑलरेडी इंडियन आर्मी वाज अबव दैट इंडियन आर्मी कैप्चर्ड सियाचिन ग्लेशियर फर्स्ट so after that they could not Pakistani army obviously after that they cannot capture because ଜାଣିଥିବେ ତମେ higher ground ରେ usually ଯଦି forces ଅଛି then it is easier for that to defend lower ground ରେ ଯେ ଚଢିକି ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ easily ମାରିପାରିବା so Pakistan army was unable to dislodge Indian army from the higher ground so till from that time till today Indian army keeps on continuously they are occupying this area capture କରିକି ରଖା ହେଇଛି so because ଆମେ ଯଦି ଛାଡିଦବୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆସିକି ଏଠି ବସିଛି एंड एठी बसिले प्रॉब्लम केवल एटा नुह प्रॉब्लम होची एठी बसी से माने ई एरिया को कंट्रोल कर परिए ना सो हायर ग्राउंड रो पॉइंट होची कि ऑलवेज आर्मी आर्म फोर्सेस विल ट्राई टू हैव हायर ग्राउंड बिकॉज देन दे विल बी एबल टू कंट्रोल ए लार्जर एरिया जेतले देखियो 2020 गलवान क्लास परे भी इशू कोन हला कि तापर इंडियन आर्मी हाउ दे ट्राई टू रिटेलिएट से माने कोन कले ब्लैक टॉप तुम सुनथियो एटा गोटे ए भले आउ दु तीनटा एरिया को से माने कैप्चर करने जस्ट टू ब्रिंग चाइना टू द टॉप टेबल चाइना तो डिस्कशन भी आसुन तो आम फोर्स करने इंडियन आर्मी कौन कला से गोटे ऑपरेशन राति अधे एमती ऑपरेशन कले जो हायर ग्राउंड वाला एरिया था कैप्चर करने व्हिच वाज पार्ट ऑफ द बफर जोन व्हिच वाज आल्सो समथिंग दैट चाइना वाज नॉट एक्सपेक्टिंग से भावुन कि इंडियन आर्मी जाके प्रोएक्टिव स्टेप नब तो वन ऑफ दैट वाज ब्लैक टॉप जो हायर ग्राउंड से कैप्चर करने दैट मींस गोटे वाइडर एरिया को कंट्रोल करने लगे सो तापर जाकि चाइना को फोर्स माने चाइना को फोर्स कराला कि आसी तुम नेगोशिएट करो अदरवाइज चाइना तो नेगोशिएट करने को आसी न था राइट सिमिलर पॉइंट सियाचिन ग्लेशियर रे भी हला तो देखि माने आर यू एबल टू ओवरऑल कंप्रिहेंड हाउ सिक्योरिटी इज लाइक अ सिक्योरिटी इश्यूटा हो गोटे कैट एंड माउस रो गेम जणे गोटे स्टेप नबो तो अन्य जणे ताको काउंटर करिया को ट्राई करियो अन्य जणे जतले काउंटर करिया को ट्राई करियो अपोजिट पार्टी कोन करियो तारो काउंटर काउंटर ट्राई करियो राइट so similar thing has happened in Siachen as well as Galwan okay चलो सर आज मोर आओ गोटे बांग्लादेश पढ़िए क्यूरियोसिटी थाए सॉरी सॉरी सर गोटे क्यूरियोसिटी मोर अछि हाँ हाँ बचा ଯେତେବେଳେ ଏମିତି war ହଉଥାଏ କି ବ୍ୟାଟେଲ ହଉଥାଏ ଆର୍ମି ଆର୍ମି ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଭାବେ କି ଏକାଥରେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ତ ଯିବ ବମ୍ ପକେଇଦବ war ସରିଯିବ ଏତେ କାଇଁ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି तार भी ଟିକେ बहुत सारा ଭାବେ लिमिटेशन तार भी बहुत सारा लिमिटेशन ट्राई टू अंडरस्टैंड ये ज्योग्राफी भी लिमिटेशन अछि अन्य लिमिटेशन अछि पॉइंट होची कि सपोज यू आर सेइंग कि हमें सब एयरक्राफ्ट एका संगे पठेइ दी कथा होची एठी भी एयर डिफेंसेस अछि ना एयर डिफेंस माने सरफेस टू एयर मिसाइल्स अछि सैम्स जाको कहब एठी से जो मिसाइल्स गुडा रखा है जोटा कि एठु यदि किसी एयरक्राफ्ट आसियो ताले हम ताको मारी पकेइ दू एंड गोटे फाइटर जेट जिते फास्ट हेले भी गोटे मिसाइल टू बहुत सारा मिसाइल एका संगे को टारगेट कले फाइटर जेट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द फाइटर जेट टू एस्केप एका संगे हम ट्राई करा माने मिसाइल नहीं कि ड्रॉप करिया को फर्स्ट कथा हला सब फाइटर जेट को हम लूज कर दो सिमिलरली सेमाने भी जदि आसिया को ट्राई करी इंडिया रे भी हम एयर डिफेंस सिस्टम अछि अगेन इट इज आल्सो ए कैट एंड माउस गेम ओके नाउ द सेकंड पॉइंट होची कि एभलिया जिनस केबे भी होवनी कि हमें एका संगे सब फोर्स को पठे दा गोटे जाओ बिकॉज एटा कोन हबो कि इट्स लाइक यू आर पुटिंग योर ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट
ଏବେ ହେଇପାରେ କି ତମେ ସବୁ ଜେଟ୍ କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଠଉଛ ସପୋଜ ଏଠି ଏୟାର ଡ୍ରପ୍ କରିବାକୁ, ତ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ବାକି ଏରିଆ ଭଲନେରେବଲ ହେଇଗଲା। ତ ଏପଟୁ ଆଡୁ କଣ କରିବ ଚାଇନିଜ ଆର୍ମି ଆସି ଏଇ ସବୁ ପପୁଲେସନ ଏରିଆରେ ବମ୍ବିଂ କରିଦେବେ। ସୋ ନାଉ ତମେ ଏଇ ଏରିଆରେ ବମ୍ବିଂ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଆମର ଅଧା ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯିବ। एंड थर्ड मोस्ट पॉइंट है कि इट्स नॉट एज इजी एज कि आम डायरेक्टली मिसाइल छाड़देवा कि प्लेन पठेदेवा। फर्स्ट कथा है यू ट्राई टू सी जियोग्राफी केते लिमिटेशन देख, एठी अछि इंडिया, चाइना अछि एती ह्यूज एरिया, मेजर पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज इन दिस पार्ट। देखियो यदि बीजिंग शांघाई एगुड़ा सब एई पार्ट रे अछि, यू सी व्हाट इज द डिस्टेंस। पॉइंट होछि कि एठू फर्स्ट कथा एठू यदि मिसाइल किछि हम छाड़िबु से मिसाइल रो स्पीड फर्स्ट कथा रेंज भी एते बेसी हेई नथियो, जदि बाय चांस आसिला एती बेसी गला एठी पहुंचला बेलू स्लो डाउन ହେଇଯିବ। नाउ इट विल बी इजियर फॉर देम टू स्ट्राइक डाउन। बर्तमान चाइना कौन करियो रिलेटिवली देखो चाइना रो ज्योग्राफी ताकू केमती हेल्प करूची। इफ दे आर कमिंग एंड 87 एयर बेस क्रिएट करिवे नाउ दे कैन बेटर अटैक इंडिया। एबे सेमाने सेम जिंस तापर दे रिटेलिएट करी इंडिया ऊपर ताले मोस्ट ऑफ इंडिया विल बी डिस्ट्रॉयड। सो एटा तो ए सब पागलामी हमर करियर ही नै कि हमें एका संगे बहुत सारा मिसाइल पठेके डिस्ट्रॉय कर दू। सेकंड कथा है एका संगे तुम सब जिंस डिस्ट्रॉय करि परिबनी, आम पाखे सेतिक इंटेलिजेंस भी नहीं कि ताकर चाइना रो को पार्ट रे ताकर स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स अछि ହେଇପାରେ ଏଇଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମିସାଇଲ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାବିବା କି ଆମେ ସାଂଘାଇ ଚାଇନା ଏଇ ସବୁ ଏରିଆକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମାନେ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ, ଏଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମିସାଇଲ ଆଣିକି ପକେଇଦେବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜିୟର, ଏତେ ଇଜି ଜିନିଷ ନୁହଁ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ନେଇକି ବମ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇ ସବୁ ଉଡେଇଦବା। ବହୁତ ମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ଇଟ୍ସ ଏଣ୍ଟାୟରଲି କ୍ୟାଟ ଆଣ୍ଡ ମାଉସ ଗେମ୍। ତମେ ଦେଖିବ ବହୁତ ସାରା ଇନଭେଜନ ବିଷୟରେ ଦେଖ, ଇରାକ ଇନଭେଜନ ବିଷୟରେ ପଢିବ, ହାउ ଦ୍ୟାଟ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ, ବହୁତ इंटरेस्टिंग स्टोरी। Now again I'm not going to go into detail, just to give you an example कि देखो यूएस आउ तार allies बहुत ही स्ट्रांग माने बहुत ही पावरफुल कंट्री थिले, बट फिर भी इराक को तांको काउंटर करे बहुत टाइम लागला। अब फर्स्ट से माने कोन कले कंट्री विल नॉट डायरेक्टली गो एंड बॉम्ब ए टाउन और सिटी फर्स्ट, बिकॉज से माने जानछन इराक रो भी फाइटर जेट्स थिला, तार भी एयर फोर्स थिला। तो से माने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे विल टारगेट एयर फोर्स, एंड in fact even before air force first they will target their intelligence system communication system को टारगेट करा जाए सब बेले। फॉर एग्जांपल सब सैटेलाइट मान को टारगेट करा हो, तांकर जहां कम्युनिकेशन सेंटर कमांड सेंटर थिबो टारगेट करा जो। तो यार पॉइंट कोन इट्स लाइक दे आर मेकिंग यू ब्लाइंड। तुमर कम्युनिकेशन सिस्टम ही डाउन हे गले, तुमर जते फाइटर जेट थाउ, तुमर जते टैंक थाउ जहां थाउ, यू कैन नॉट यूज देम बिकॉज़ यू डोंट नो कि एनिमी कोठी अछि, राइट। सिमिलरली तुम एमती भावुथो कि आम डायरेक्ट फाइटर जेट को माने एठी एरोप्लेन को एठू पठे दू एंड सेठी बम ड्रॉप कर दू, सेमितिया हुएनी। तांकर भी बहुत डिफरेंट फॉर्मेशंस अछि, एंड किछि भी से फॉर्मेशन में फाइटर जेट माने गले तांको संगरे यूजुअली गोटे एडवांस और कोन कहबे एरियल अर्ली वार्निंग सिस्टम गोटे एयरक्राफ्ट जीवो ता संगे। दिस इज बेसिकली एन एयरक्राफ्ट जहा ऊपर गोटे रेडार लागिछि। तो दिस एयरक्राफ्ट इज समथिंग जोटा कि से कंटिन्यूअसली रेडार इंफॉर्मेशन दउथो तारो फाइटर जेट्स मानको। So this is for again for domain area, domain awareness में बहुत जिनस अच्छी ता भीतर, don't need to go into detail, just I'm just trying to tell you कि it's not as easy कि हम just bomb drop कर दू, right? You cannot do that, एते बहुत बहुत डिटेल माने बहुत कॉम्प्लिकेटेड जिनस अछि, और जदि सेमती पागल भले बॉम्ब ड्रॉप करियो your country will be destroyed, okay? Yes, Sir, Even sir. we ସେମାନେ cannot, war is not permanent solution. yes that सेटा तो चलो सेटा माने that is a different thing, I was just talking about defense ground रे हमको। ଏବେ ମୋରାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ବି ତାର ଅପୋଜିସନ ଅଛି, ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ବି ଅପୋଜିସନ ଅଛି, ପଲିଟିକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ବି ତାର କାଉଣ୍ଟର ଅଛି। ମୁଁ କେବଳ ଡିଫେନ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଡିସକସ କରୁଥିଲି କି ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ପସିବଲ, ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ପସିବଲ। ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ କଣ କହନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ଫେସବୁକ ରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ପାକିସ୍ତାନ କିଛି ଇସ୍ୟୁ କଲା ଫେସବୁକ ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଆରେ ମୋଦି जी କାହିଁକି ଯାଇକି ସେଠି ବମ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିଦଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ଆମର ତ ହ୍ୟୁଜ ଆର୍ମି ଅଛି, ବହୁତ ବଡ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଅଛି, ଆମେ ସିଧା ଯିବା ଗୋଟେ ଦିନ କଣ କରିବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ବାହାରିବା ସିଧା ପାକିସ୍ତାନରେ 1000ଟା ବମ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିଦବା। दिस इज हाउ पीपल थिंक, दिस इज हाउ वॉर वर्क्स। आई एम टेलिंग यू कि दिस इज नॉट एज सिंपल, एतरे बहुत जिनिस अछि। जदि एमती हठात राति अदिया बाहरी पाकिस्तान ऊपर बम ड्रॉप करियो देयर विल आल्सो बी एन इशू। सर्जिकल स्ट्राइक इज अ डिफरेंट थिंग, आ गोटे वार करवाटा गोटे डिफरेंट। सर्जिकल स्ट्राइक इज रिलेटिवली इजियर, वार इज मच मोर डिफिकल्ट, ओके। So currently continue Ukraine and Russia war हाँ देखो like much. रशिया रशिया भी देखो एते पावरफुल हेई कि भी ସେମାନେ कौन कंप्लीट विक्ट्री ए पर्यंत पाई परछन, ସେମାନେ still they are losing their men, they are losing their armed forces, so assets lose କରୁଛନ୍ତି, still they are continuing।
यूक्रेन याठू केते लेस पावरफुल है कि भी इट इज एबल टू विथस्टैंड. तो तुम भाबो कि तुम कोन भाबुचो कि पाकिस्तान को हमें रात राती उड़े दो. It will also be very difficult. So please don't make such kind of comments in Facebook or Instagram. As you know, as an educated individual, I expect you to have more critical thinking ability. Sir, Pakistan has a more powerful nuclear plant, nuclear energy, Nah, I'm a more than nuclear India. powerful more. Maybe they are producing more energy, but that doesn't mean कि yes, maybe they are yes nuclear warhead भी तांकर अधिक तांकर अच्छी अधिक अछि number. सर तांकर Yes, 165 and we have 156 yes. I think. But you try to understand कि यार भी इतने सारा पॉइंट नहीं कथा होची 160 न्यूक्लियर वारहेड जणे रखियो 150 जणे रखियो. If you are thinking 150 वारहेड जे रखिछि से हारी जिवो, it's सर completely गोटे रे ही fixed. काम तमाम. Yes, ଗୋଟେ କି ଅତି ବେଶୀରେ 5ଟା ରୁ 10ଟା ରେ ତୁମ କାମ ସରିଯିବ. ତ 160 ଆଉ 150 ଭିତରେ କିଛି ବି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ. But sir, China always with the Pakistan to defeat the ସେଇଟା ବି India. ହଁ ସେଇଟା that is also concept which is known as two front war. It is now saying that we are facing a two front war. ମାନେ ଆମେ war ଗୋଟେ single front ରେ face କରୁନୁ, ଆମେ ଦୁଇଟା front ରେ face କରୁଛୁ. ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରେ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଇପାରେ କି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଚାଇନା ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ. So for that reason also we don't want to start a war with Pakistan. ଏବେ ହେଇପାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସାଙ୍ଗରେ war start କରୁ କରୁ ଚାଇନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ. ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିଗଲେ ଆମକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା difficult ହବ. That is also one reason. Any other doubts if you have? Otherwise, rest topics will take up in the next class. By the way, it's possible that we'll change our schedule a bit because of Manas sir's ill health. So it will be updated in the class. Any other doubts, or else we'll wrap up today's class. Thank you, sir. ठीक है. Thank you. Then we'll meet in the next class. Okay. Good night.